अस्सलाम वालेकुम। भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और हम 2 हफ्ते से कुछ आगे चले गए, लेकिन माशाल्लाह से आज हम वहीं चले। आप कैसे हैं सर? बस अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ। माशाल्लाह बड़ा यूँ कह लें कि नेक काम कर रहे हैं और फार्मासिस्ट कॉज के लिए काम कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि मतलब जो जज्बा है वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, और ये ज़रूरत भी है बाकी। और बीइंग ए पाकिस्तानी फार्मासिस्ट, हम सब का ये फ़र्ज़ है कि जॉइंट हैंड करते हुए अपने मिशन को आगे बढ़ाएं और प्रोफेशन के लिए जहां हम अपने अ, दीगर मामलात को लेके चलते हैं, वहीं साथ ही साथ उसकी भलाई के लिए जूनियर फार्मासिस्ट के लिए काम करें। जबरदस्त। और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि गुज़िश्ता 15 सालों से अ, मैं इस हवाले से काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी मोहब्बत है कि आपने वहाँ से होते हुए एक इस मिशन को कंटिन्यू किया। और बड़े करज की बात है, क्योंकि फी ज़माना इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है कि लोग सिर्फ अपनी ही बात करते हैं और दूसरों के बारे में कम सोचते हैं। तो ये अल्लाह का करम है कि उसने आपके दिल में ये बात डाली। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छी बात की आपने। एसोसिएशन इस हवाले से पाकिस्तान की सबसे लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फार्मेसी कॉज के लिए काम कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे साथ आज की इस नशिस्त में डॉक्टर राफिया अहमद भी हैं। आपके इल्म में है कि वो होस्ट भी हैं और हमारी यूँ कह लें कि सेंट्रल कैबिनेट के मेंबर भी हैं। थैंक यू। तो मैं चाहूँगा कि वो भी
इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। डॉक्टर लियाकत रज़ा हैं, ये प्रोफ़ेसर हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में डीन भी रहे हैं और माशाल्लाह। रिसर्च स्कॉलर हैं और जर्मनी से इन्होंने पीएचडी किया अल्हम्दुलिल्लाह और स्वीडन से पोस्ट डॉक किया माशाल्लाह। और हमारे पैटर्न भी हैं, हाँ। तो बड़ी एक्सपर्टीज़ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और पाकिस्तान भर में हमारे यूनिट्स हैं और हम वेब पाकिस्तान में सबसे पहले हमने वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे स्टार्ट किया अरे वाह! कल के करीब। बस तो कॉन्फ्रेंसेस, हेल्थ वॉक, सेमिनार, सारी चीज़ें, इंटर्नशिप प्रोग्राम, हॉस्पिटल फार्मेसी जी, प्रैक्टिस जी, जी, और कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस ज़बरदस्त माशाल्लाह। में जारी और सारी है और 8000 से अबव फार्मासिस्टों को हम अब तक इंटर्नशिप करा चुके हैं हॉस्पिटल और कम्युनिटी में। 8000 से ज़्यादा माशाल्लाह। देखिए, यस, तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है और ये सिलसिला और मिशन जारी है। तो उसमें आपका इज़ाफ़ा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बड़ा काबिल सताइश है और क्योंकि आपको मैं रिगार्ड भी करता हूँ, ऑनर भी करता हूँ। बहुत अल्लाह शुक्रिया। ताला आपको और हिम्मत दे और मामलात और अच्छी तरह चलें और वहाँ की इमिग्रेशन के हवाले से जो मुश्किलात हैं पाकिस्तानी फार्मासिस्ट को, वो आपके ज़रिए कम हों और रास्ता हमवार हो ताकि वो आप तक पहुँच सकें। तो जी, ये कह लें कि हमारी ख्वाहिश है और अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी देगा क्योंकि खुलूस और मोहब्बत के सफ़र में हम जूनियर फार्मासिस्ट को लेके चल रहे हैं और अल्लाह ताला की ताईद से ये डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। तो बिल्कुल। राफ़िया अगर मौजूद हैं हाउस में तो वो भी प्लीज़ जॉइन करें। जी, थैंक यू ज़ैन भाई, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी अपनी काम, अपने वर्क, अपने इंस्टीट्यूशन, अपने पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया कुछ लफ्ज़ों में। मुझे बहुत खुशी हो रही है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया है इस काम के लिए, तो आई थिंक यू आर चोज़न पर्सन फॉर दिस वर्क एंड जब हम किसी सीनियर को इस तरह देखते हैं तो हमें मोटिवेट होना, मतलब मोटिवेट होना चाहिए। और मोटिवेट, मुझे तो बहुत मोटिवेशन हो रही है कि मैं आपके गिर्द बैठा हूँ और हम इस ज़रिए, आपके ज़रिए से वो मैसेज हम एक वाइडर जनरेशन, जो नए बच्चे हैं फार्मासिस्ट के, उनको हम ये मैसेज दे सकेंगे। और आप जब इस नशिस्त पे बैठे हैं तो उनको उनको कॉन्फिडेंस फील होगा, उनको हौसला होगा कि ये जो फॉरेनर बैठा हुआ है बाहर से, हो सकता है कराची से बहुत पहले चले गए हो, लेकिन उसको आप इंडोर्स कर रहे हैं, उस मैसेज को बेसिकली आप इस नशिस्त में बैठ के। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतने वेल हाईली एजुकेटेड लोगों के साथ मैं बैठा हूँ। मैं तो जस्ट मतलब फार्मेसी करके यहाँ आ गया था और मैंने यहाँ के लाइसेंसेस किए, रिसर्च बहुत की, लेकिन कोई डिग्री नहीं ली रिसर्च के अंदर। तो पाकिस्तान में कल्चर है डिग्री का कि डिग्रीज होनी चाहिए आपके पास, तो आपको फैकल्टी मेंबर या उस तरह की जॉब्स में मौका मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब ये ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने जब वीज़े में कुछ सहूलतें की और जब यहाँ नीड बढ़ी, तो मुझे फील हुआ कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और मैं इसको बिल्कुल, कोई कॉस्ट तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको मैं जितनी तेज़ी से जहाँ तक पहुँचा सकूँ वो पहुँचाऊँ। तो फिर मैंने, जी, तो आपने आपने मुझे विटनेस भी किया, कई दफ़ा मैंने आपको मैसेजेस भी किए हैं पिछले वेबिनार्स के, तो ये बहुत अच्छा मौका है। और थैंक यू सो मच फॉर अगेन, थैंक यू राफ़िया, डॉक्टर राफ़िया अहमद और डॉक्टर लियाकत। और मैंने एक छोटा-सा वीडियो भी बनाया था क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, मेरी ट्रैवलिंग होती है, मैं रीजन में भी काम करता हूँ और सिटी में भी काम करता हूँ। तो मेरी बेटी मेरे साथ बैठी थी, तो मैंने उसको बोला कि मेरा ये कैमरा पकड़ो, मुझे फ़ौरन एक वीडियो मैसेज देना है क्योंकि मुझे थैंक यू बोलना है, स्पेशली जो कि आज होस्ट होंगे हमारे साथ प्रोग्राम में, ताकि उनको थोड़ा-सा मेरी तरफ से ईज़ी फ़ील हो कि आई एम नॉट आउटसाइडर, आई एम जस्ट लाइक यू। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, am I audible? जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है, शुक्रिया। जी, जी। I am so privileged and honored सर कि आपके और सर जैन के साथ तो हमने हमेशा ही इतना कुछ सीखा है उनकी मेंटोरशिप में और उनकी ही गाइडेंस और उनकी ब्लेसिंग्स रही हैं कि जिसकी वजह से आज तक हम जहाँ पर भी पहुंचे हैं और ये बहुत सारे आपको फार्मासिस्ट पाकिस्तान के एंडोर्स कर सकते हैं एंड वी आर ऑनेस्टली वेरी वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव यू टुडे सर विद फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन and it's
a complete honor because Pharmacy Graduate Association has always focused कि पाकिस्तान में pharmacist की growth कैसे हो सकती है further, you know. हमारी different, जैसे कि सर ने भी अभी previously explain किया है कि हमारी different contributions ही ये रही हैं कि how एक जो initially step पे ही ये होता है कि whenever a pharmacist enters the field, so they feel a little bit you know, negligence. Alhamdulillah, my choice of pharmacy profession was on my passion. I decided to come into this profession. लेकिन ज्यादातर सर ऐसा ही होता है कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमें दूसरी फील्ड में जाना था, एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैव वाउंड अप इन दिस फील्ड. और उसका जो एक इनसिक्योरिटी है वो ही बहुत टाइम ले लेती है ओवरकम करने के लिए कि फाइनली a person decides कि what next, you know, how to actually feel confident in yourself and do something for the field and build something of yourself. तो उसके लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि मतलब एक तो ये कि डेफिनेटली पैशन होना चाहिए इंसान के अंदर, और अगर इफ यू हैव वाउंड अप इन दिस फील्ड आल्सो, तो फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन और सर आज आपके भी सेशन से हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा इंशाल्लाह. तो वी विल लर्न दिस थिंग कि हाउ यू नो नॉट टू lag behind and how you can conquer those things and lead forward in your lives कि आगे कैसे बढ़ना है, you know. And this field is alhamdulillah, I would like to say here कि मतलब इतने सालों से I've been associated with this field and especially with Pharmacy Graduate Association also. मैं जरूर कहना चाहूंगी सर कि हमारी फील्ड में जितनी डायनामिक पॉसिबिलिटीज हैं वो शायद ही किसी फील्ड में है, और आज आपके सेशन से भी हमें बहुत ज्यादा चीज में कॉन्फिडेंस मिलेगा इंशाल्लाह कि इट्स नॉट ओनली मतलब बेस्ड इन पाकिस्तान बट आल्सो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड, यू नो, हमारा क्या सिग्निफिकेंस है और हम कहाँ पर बहुत सारे काम कर सकते हैं. सर के बारे में मैं जरूर बिफोर वी आर ऑफिशियली बिगिनिंग विद द सेशन आई वुड लाइक टू सी फर्स्ट कि हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स डू वी हैव, and if I have the permission of Sir Zain and Sir Irfan, so would you like to continue with the session? Should we initiate the session? आगे बढ़े सर हम सेशन में. तो फिर मैं ऑफिशियली सर को इनवाइट कर लूंगी and then we can have a session. Yeah, are we going to wait for more participants? जी डॉक्टर रफिया, आई थिंक आई एम जस्ट लुकिंग एट, अभी बहुत सारे लोग एकदम ज्वाइन कर रहे हैं, तो गिव देम मे बी 1 or 2 more minutes. थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. राइट, लेट्स गिव इट लाइक 10-15 मिनट्स. आपकी जो बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कंटिन्यू कर. पीजीए के तो मैं बाद यही बता रही थी सर कि in pharmacy as a field is like so much, it has so much avenues, you know. Community pharmacy मतलब एक मेगा जायंट है जिसको हम टैकल कर सकते हैं, और वर्ल्ड वाइड तो उसकी सिग्निफिकेंस आप ही हमें बताएंगे सर, और हमने भी मतलब जितना हमने स्टडी किया है आज तक, और उसके अलावा भी you know इंडस्ट्रियल फार्मेसी भी हो जाए या इट मे बी यू नो अकेडमिशियंस और हॉस्पिटल फार्मेसी. आई थिंक कि जिस तरह का स्कोप फार्मेसी प्रोफेशन का है, यू नो, पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह डेवलप हो रहा है. हम सबकी काविशें रही हैं उस चीज के लिए, और इंटरनेशनली तो रहा ही है, यू नो, ओवर दीज ईयर्स. तो हमें ये चीज देखने को मिलती है कि नॉट टू फील लैग बिहाइंड और नॉट टू फील अ लिटिल बिट, यू नो, शाय ऑफ योर फील्ड, बल्कि यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड पैशनेट ऑन योर फील्ड कि आपकी जो फील्ड है ना अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी डाइवर्स और हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर रहते हुए. सो इट्स अ कंप्लीट ऑनर कि अगेन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन ने और सर आपने, हम दोनों फील्ड्स ने, यू नो, दोनों प्लेटफॉर्म्स ने कोलैबोरेट किया है इस चीज के ऊपर, क्योंकि मैं और बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट जो कि एक यू नो यंगर बैकग्राउंड से आते हैं, जरा भी फील्ड कुछ ही साल हुए ज्वाइन किए हुए, और आगे हमारे बहुत सारे यू नो एक एम्बिशंस हैं, वी हैव गोल्स टू अचीव. तो वो कैसे हम फर्दर लीड ऑन कर सकते हैं, और पाकिस्तान में रहते हुए भी और इंटरनेशनली भी हाउ वी कैन अचीव दोज थिंग्स. सो इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज सर टू हैव यू टुडे. आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर बीइंग विद अस टुडे. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. जैसे कि मैं अपनी एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करूंगा. जो स्टूडेंट्स यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में, तो यहाँ पे हर साल उनसे सर्वे करवाया जाता है कि आप आने वाले, जब आप पास आउट हो रहे हैं, तो वे यू वांट टू सी यू वर्किंग. तो ये इस तरह का कुछ आपके यहाँ सिलसिला है, कुछ इस यूनिवर्सिटीज में कुछ आप लोग करते हैं? बिल्कुल सर, हम इनफैक्ट काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, दे हैव कंसर्न्स के व्हाट यू नो हमारे पास क्या एवेन्यूज हैं, क्या हम जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं. इनफैक्ट हम बहुत सारे स्पीकर से भी लाइन अप कर रहे होते हैं. कोशिश हमारी यही रहती है, हम पीजीए के प्लेटफॉर्म से और बाकी भी और यूनिवर्सिटीज के थ्रू हमने हमेशा यही कोशिश की है सर कि एज मच एज पॉसिबल, यू नो, स्टूडेंट्स को अवेयरनेस क्रिएट हो, ताकि वो फिर अपना जो भी एक लॉजिकल बेस्ड डिसीजन है
where they are feeling inclined and they can go forwards towards that. So yes sir, we do try to do that. ओके देखिए, मेरा जो इस एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो मेन मोटो था पीछे से, मुझे पता चला था कि ऑस्ट्रेलिया के जो स्टूडेंट्स हैं ना यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट रियली लाइकली टू वर्क इन रीजनल कम्युनिटी फार्मेसी एरियाज. ओनली 1% मे बी द सर्वे, लेटेस्ट सर्वे जो अभी यहाँ की जो स्टूडेंट एसोसिएशन है ऑस्ट्रेलिया वाइड, उसको नैप्सा कहते हैं, उनके सर्वे के रिजल्ट्स ये कहते हैं कि हार्डली 2% भी ये पासिंग आउट करके स्टूडेंट रीजनल्स में काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि दे वांट टू लिव मॉडर्न सिटी लाइफ. तो मुझे नजर आ गया था कि दैट गैप विच इज स्टिल ए कॉज फॉर माइग्रेशन दैट विल कंटिन्यू देयर. सो व्हाई नॉट वी टेक दिस मैसेज ब्रॉडली. तो मेरे वेबिनार पे मैं बात ही शुरू करता हूँ कि भाई आपको पता है जॉब कहाँ मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में. डोंट एक्सपेक्ट कि आपको सिडनी हार्बर की किसी फार्मेसी में जॉब मिलेगी. यू नीड टू थिंक डे वन कि वे यू विल बी लैंडिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड वे यू विल बी अप्लाइंग एंड वे यू गेटिंग द जॉब. तो अल्टीमेट गोल क्या है किसी फार्मासिस्ट का, कि उसको काम कहाँ मिलेगा, रोजगार कहाँ मिलेगा. वीजे वगैरह भी बीच में आ जाते हैं जब अगर हम फॉरेन कंट्री में आते हैं. तो अल्टीमेट तो है कि आपने अपने प्रोफेशन में कहाँ आके वर्क करना है. तो वो मैं उनको फर्स्ट बता देता हूँ कि यार ये जगह है, यहाँ आप अपने माइंडसेट को तैयार करें. क्योंकि अभी वेबिनार से पहले अभी मैं कराची यूनिवर्सिटी के एक ग्रेजुएट से बात कर रहा था जस्ट 10 मिनट्स पहले. तो वो कहते हैं मैं 4 महीने से ऑस्ट्रेलिया आ गया हूँ, यहाँ पे मुझे जॉब नहीं मिली. तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा डू यू नो वेयर द जॉब्स आर. वो कहते हैं मेरे ख्याल से कहीं भी मिल सकती है. मैंने कहा नो, यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर मेनी इयर्स इन ऑस्ट्रेलिया लिविंग इन सिटी ऑफ मेलबर्न एंड यू वोंट गेट work, you won't get the opportunity. Better to jump on the opportunity, go to the right direction. तो ये चीज़ बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास जहाँ यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लोग मतलब स्टूडेंट बन के आ तो जाते हैं, लेकिन उनको जॉब मिलने में बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं क्योंकि दे वर नॉट लुकिंग एट द राइट स्पॉट्स, राइट एरियाज. और I know that there are people who wasted 5 years, 6 years in Australia just because no one guided them properly. They think that कि वो जहाँ रहते हैं उसी सबब में 2-4 फार्मेसियाँ हैं, या ऑनलाइन उन्होंने देख ली, जॉब मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो उनके पास एक और इनकम होती है जो कि बड़ी इजी होती है ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए, कि वो ऊबर ड्राइविंग शुरू कर देते हैं. दैट इज द गुड मनी, बट you are not here to drive Ubers. You are here to You are here for your profession. You are here to work excellence, become leader, become industry leader, entrepreneur. So that's the window that I normally show in my webinar. So that's a different way of talking to pharmacists, overseas pharmacists. So वो अगर कोई समझ जाता है तो वो समझ जाता है. जो बहुत सारे लोग होते हैं नहीं समझ पाते हैं, तो या वो समझना नहीं चाहते हैं, या थोड़ा सा उनको टाइम लगता है समझने में. तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे साथ जो दे आर डूइंग वेरी वेल, अमेजिंग, एंड सम ऑफ देम आर स्टिल थिंकिंग कि हम कैसे अपने आप को डेवलप करें. तो ये बात मैं चाहूँगा कि हम अपने स्टूडेंट्स को बताएं. वीज़ास के बारे में बताना चाहूँगा कि 22 नवंबर, अभी जो नवंबर गुजरा है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स थी यहाँ पे, उन्होंने रिलैक्स कर दिए कि 3 साल का जो रिक्वायरमेंट होता था वर्क एक्सपीरियंस का, वो भी वेव कर दिया उन्होंने. ये कहा कि हमें वर्क एक्सपीरियंस के बगैर हम इनवाइट करना चाहते हैं. तो ये बात पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट ऑफिस रन कर रहे हैं वहाँ पे ये बात पहुंची नहीं. और कन्फ्यूजन इतनी होती थी कि मेरे वेबिनार में आके स्टूडेंट मुझसे लड़ते थे कि आप सही कह रहे हैं या वो कंसल्टेंट कराची में जो सबसे वेल नोन है जो टीवी पे आके बोलता है वो सही कह रहा है. तो ये चीज़ें भी डिस्कस करने से बहुत सारे लोगों के वीजेज हुए हैं जिन्होंने जैसे कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, लास्ट ईयर के फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, दे डिड द एग्जाम, दे डिड द पीटी एग्जाम एंड जस्ट अप्लाई फॉर स्टेट नॉमिनेशन. उनके पास एक हफ्ते में स्टेट नॉमिनेशन आ गई, उन्होंने वीज़ा लॉन्च कर दिया अपना. अगर उनकी शादी हुई भी है तो उन्होंने अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कर दिया. तो इट्स सो सिंपल एट द मोमेंट. तो ये चीज़ अगर मेरी तरफ से किसी को पहुंच जाएगी तो आई विल फील हैप्पी कि मैंने किसी की लाइफ में कोई अच्छी चीज़ चेंज करवा दी. तो अल्लाह ताला उसका सवाब देगा मुझे. लोग समझते हैं कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता. बहुत सारी जगहों पे आपको कोई चीज़ ऐसी भी करनी होती है जो आपको खुशी दे या आपके लिए अल्लाह ताला से करीब बनने का एक जरिया बने. सर मैं यहाँ पे एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जो आपने बात की है ना एम्बिग्विटी की और नॉट क्लियर अवेयरनेस की, दैट इज वेरी ट्रू बिकॉज एज यू नो कि ऑनलाइन रिसोर्सेज आर लाइक सो वाइड स्प्रेड. इवन जो लोग हैं प्रैक्टिकली जो आप जहाँ पर हैं एंड देन यहाँ
के जो लोग हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है या जो अवेयरनेस की कमी है, उसकी वजह से भी बहुत एक तो वैसे ही अ पर्सन डिसाइडिंग टू गो अब्रॉड, उसके दिमाग में बहुत सारे एप्रीहेंशंस होते हैं, एंड देन इफ ऑन अबव ऑफ इट कि आपको और भी कंफ्यूज कर दें लोग, और भी आप यू गेट अ लिटिल बिट डाइवर्टेड कि करना क्या है, व्हाट इज द राइट पाथ टू चूज. So again, sir, it's great, sir, that you are doing this thing. It's a great initiative that you are taking कि आप अपनी तरफ से awareness spread कर रहे हैं, जो कि likely present day awareness है कि क्या real scenarios हैं, और being like there for like 20 years and above, क्या आपने experience किया है, और अभी के pharmacist के लिए आगे के क्या avenues हो सकते हैं. So it's great, sir. Thank you so much. थैंक यू. और मैं भी चाहूँगा कि अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हों तो वो भी आप डिस्कस पूछ सकते हैं, और अगर हमारे जो कोलीग्स हैं इफ दे वांट टू आस्क क्वेश्चन, मैं देख रहा हूँ चैट के अंदर मुझसे कुछ जी क्वेश्चन सर, बिल्कुल. वो हम आपका सेशन ले लेंगे, देन द क्वेश्चंस आई एम राइटिंग देम डाउन, एंड जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे या जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस कर जी लेंगे. जी. और ये वो उधर यूट्यूब, मेरे जो यूट्यूब का एक है सेक्शन, उसमें ये लाइव भी देखा जा सकता है, तो उसको वाइडर ऑडियंस देख सकते हैं. तो अभी तक हमारे साथ तकरीबन 22 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया, तो मेरे ख्याल से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम हमने जो दिया है वो काफ़ी है. तो बिल्कुल सर. प्लीज़ जैन भाई, क्या ख्याल है, आपकी इजाज़त है तो हम स्टार्ट करें? जी जी, डॉक्टर लियाकत को देख लें, वो रूम में मौजूद हैं. वो भी नजर डॉक्टर जी जी, डॉक्टर लियाकत साहब, आप मेरे ख्याल से म्यूट पे हैं अभी. चले, अच्छी बात है. तो राफिया, फिर आप स्टार्ट लें और श्योर सर. हम फिर Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So we have been continuing with discussions for quite some time. Lekin let's officially begin with our session as well. We are so honored from the platform of Pharmacy Graduate Association. We have always aimed to provide important and unique learning opportunities for our students. Either they are living in Pakistan or abroad also. So in continuation with that theme, we are hosting today's webinar, in which we are so pleased to have with us Honorable Sir Irfan Hashmi sir. He has been a community pharmacist based in Australia for the previous 20 years, and he, along with his wife, owns 7 pharmacies in the regional South Australia and Victoria. Sir has graduated from the University of Karachi in 1997. He moved to Australia in 2003 to further his studies with his very young family, which is amazing that you came here at that time. Then in 2009 he was awarded with the title of Pharmacist of the Year by the Pharmaceutical Society of Australia, which is the peak national body for pharmacists. Sir, we are very much looking forward towards your session, that what are the different pathways for Pakistani pharmacists to come in Australia and to build their life as a pharmacist in Australia. So if we were in a face-to-face session, I would have asked my audience to give a huge round of applause, but we can't do it right now. So I would like sir to please take over and please help us through this session. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Rafi Ahmed and Dr. Zain Bhai, मैं कहता हूं उनको, thank you very much for having me today, and it's a huge privilege for me to talk to young pharmacists. I always feel excited and I always feel motivated when I speak to my junior colleagues who are going to be future pharmacists. When I will be not in this world, they will be looking after the patient in their setting, in their community. So that's something motivates me. So I just want to thank you very much for arranging this. First of all, the PGA, and that pharmacist is a great profession. Pharmacist or pharmacy profession is amazing profession where I know that the audience today would be faculty students, especially the final year or maybe the passing out students. So you know that your future is looking great. Either you work in your country in Pakistan or you want to come to Australia. So I'm talking about pathways related, how a pharmacist or how a pharmacy graduate can develop their skills and come to Australia
to work in this country. I mean, in pharmacy profession, not any other profession. And when we talk about the profession, I'm talking about community pharmacy, which is very close to my heart from past many years since I graduated. So I'm a community pharmacist, and I always talk about passionately about as a South Australian community pharmacist, right? So Australia is a big country. I mean, there is a big land of opportunity. And at the moment, Australian government, since the new government has taken over last year in election, March 22, Labour government. So they have analyzed that what are the lackings happen after COVID? They are, since COVID, world has changed. So our profession has significantly changed since COVID, and that everyone knows. Even if you are a third-year student, you should know this, that how much work has come, like how much scope of work has increased in pharmacy, like how many things we are doing which we were not doing in past. Probably in Australia, I can talk about Australia, that the pharmacists were not heavily involved close to government, but in COVID, our pharmacy guild president was standing next to prime minister, next to premier in each and every press conferences. So that is the significance that pharmacists played a major role, and they need pharmacists to play a bigger role during the COVID, especially when GP services were shut. The GP was available, but they were available on phone, but pharmacists or pharmacy staff were available on face-to-face consultation, even lockdowns. And when these COVID vaccines rollout came, COVID vaccine rollout was a huge task in Australia, because there was a huge hesitation of getting COVID vaccine in the community, in local community. But pharmacists were involved around July 2021, when pharmacists were given vaccines. And then, if you remember, AstraZeneca vaccine was highlighted as a lot of side effects can happen, but pharmacists were talking to the patient, and they were easily accepting that, yes, whatever you're giving, we will take it. So all the AstraZeneca vaccine were rolled out by pharmacists in Australia, and their huge confidence level has been increased. And then we need more pharmacists in this country, and there's a scope of work increases other than just vaccination. Now pharmacists would be involved in prescribing rights of certain health condition in Australia. So that's actually happening as a trial at the moment in different parts of Australia. Once that trial is finished for 1 year, then it will be implemented in each state separately. So it is another big scope of work coming. So pharmacists will be writing prescription like doctor. So this is the future that I'm trying to show you. Another future prospect in Australia is that aged care. In Pakistan, I don't think the aged care is that developed, but in Australia, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो यहाँ पे एज केयर एक फैसिलिटी होती है, जहाँ पे ओल्ड होम्स के अंदर लोग चले जाते हैं, जहाँ पे क्योंकि उनके घर में कोई नहीं होता, यहाँ पे सब अपने, जैसे पाकिस्तान में एक फैमिली सिस्टम होता है, they don't have such thing in Pakistan. So that's why the significance of aged care is huge in Australia. And from July this year, 2023, जो कि 2 महीने बाद आने वाला है, उसमें फार्मासिस्ट को मैंडेटरी कर दिया है बाय लॉ कि बिगर नर्सिंग होम you need to have a pharmacist on your premises like a doctor. Yeah. So there's a job opportunity, significant amount of job opportunities are increasing in Australia for pharmacists. You can see that. और जनवरी 23 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पाकिस्तान एम्बेसी इन्वॉल्व था, और उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को अरेंज किया था, और उसके अंदर फार्मेसी गिल्ड, फार्मेसी सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया और कुछ बड़े कंपनी जो हैं वो लोग, उनके स्पीकर्स आए थे। तो जो सबसे फर्स्ट स्पीकर थी डॉक्टर हेलन ओब्रायन, उन्होंने बताया था कि in our regional pharmacies, regional community pharmacies, we got 3,500 jobs. 3,500 jobs at that time are possibly filled in by overseas pharmacists. So if you're listening my message at the moment, so that job can be yours. Okay, so that job can be yours. So you need to understand that if you're coming to Australia, and if you're coming to work in Australia on certain processes like fresh graduates can pass the Kaps exam, can do the PTE exam,
and can come to Australia, they can go to the regional areas, which is like 200 kilometers from main big cities like Melbourne, or 200 kilometers, 300 kilometers, 400 kilometers. They are well organized, developed areas. They are not like where you will see lacking of facilities, daily life facilities. It's not like that. So I will go through with my slides. You will understand that what I'm going to talk about. But I'm just showing you the future. Why I'm doing this webinar? Why are we talking to you at the moment? I'm just showing you the future where you can see yourself fit in Australia. All right. So I think that's a little bit starter that I have spoken. I'll just open a couple of slides. This is a very brief slides that I got, very to the point. I'll just open my screen share option. Hope it is all going smoothly for everyone to understand. I'm not talking in very fast. If I'm talking too fast, please let me know. I can slow down, and I can be if I can adjust my way of speaking as well, if that's all right. Please let me know. Okay, I would like to add here that I am connected with Zoom as well as on the YouTube link. So any questions that we are getting, I'm noting them down, and after sir's complete session, we will be addressing those questions. So to all those people who have shared their questions, please don't worry about that thing. We are taking note of everything that you want to be addressed. Inshallah, that will be addressed. Thank you, Dr. Rafi. Thank you. I'm just putting my slides here. Okay, can you please confirm if you can see my slide? Yes, sir, they're visible. Yes, sir. You can see. Okay, so this is a little bit introduction. This is me, my wife, Sobia. We originally from Pakistan, from your city. And we are operating community pharmacies from last 17 years in these regions. So these are small regions. Port Pirie, Oruru is the name of a place. Corn is again a small place in South Australia. Coober Pedy is a opal capital, mining capital of Australia. Is like in the middle of Australia, and other places are closer to the city. Okay, so the reason for talking to you is telling you about the scope and opportunity for pharmacists in our rural and regional Australia, and I can tell you that there was a NAPSA. NAPSA is a student association Australia-wide. They did a survey last year, middle of last year, asking that who and how many students would like to work in regional Australian community settings. So the survey report says that only 2%, hardly 2% out of 100% graduates want to work or pursue their career in regional Australia. So that's a huge opportunity. Who are listening today, that if you pass the Kaps exam, although you're going to have a degree from your institution in Pakistan, if you pass the Kaps exam, then you can avail this opportunity in Australia. All right. So this is I'm trying to showcase that why there's a demand for, because some students may have questioned that why we can't work in city, why we need to work in region. The reason is the jobs will be available because there's the less interest of local students. All right. And lifestyle benefits or amenities or support available in regional areas. I live myself nearly 16 years in regional Australia, and I really enjoyed working, living, the lifestyle, because the distances are very less. You live in Karachi. Karachi is a big, busy city, right? If you come through transport, you have to spend at least half an hour, 40 minutes or 1 hour in your journey, wherever you're going, from university to workplace, or in small cities, that time is actually automatically saved. So you will have more time for you will have more time for your family. So that's age. And also Australia is a sporting nation. You may have noticed that
Australia has a good cricket team, good hockey team, and other sports. When we have Olympics, they have a lot of gold medal, a lot of silver medal. Why is that? Because in all different parts of Australia, they have an amazing sporting infrastructure, including the regional sites. Where I lived in Port Pirie, the tennis centers, they have international standard tennis center. They arrange international players to come and play in Port Pirie. So you can imagine that regional areas are so much developed in terms of facilities, swimming pool, cricket grounds. I mean, what else you can do as a overseas pharmacist? You will go to your work, either you will go to your home, and then in middle you need to be busy. Either you will be spending your money on your shopping, or you'll be watching hum TV dramas rather than it's better to not to watch those dramas, because that will not give you anything. It's better to go and mix with Australian culture through these sporting events that will make more friends for you, that will make more acceptability, because friendship is very important when you come to a new area, or mean that sports is the thing which speak a language which doesn't make a difference. Either you are from a country where you are not a non-white person, so that actually take away the barrier. So that's very quick way to make friendship. So that's something available in regional Australia. So that's the positive thing that I'm trying to show you. And hospitals and police system and schooling, that's basic thing that's available. Internet, NBN, and everything is okay there. Everything is available. All right. So that's something which I want to show. I want to tell that regional area, the amount of work is over there, and working in and living in is amazing. You can have an amazing life. You can grow your children. If you're married, if you have kids, then you will have amazing sporting facility, schooling facility for them. What else you would need from a new country? All right, so this is something which a little bit about the regional area, and also some pathways are also available for people who want to pursue their career or want to migrate as a pharmacy technician without a Kaps exams. I will talk to you in detail about that, but that option will be gone very soon. I know that in next July policy, maybe they will remove this pharmacy technician pathway, but Kaps pathway, as I said to you, there's a huge demand that will be open for at least next 3 to 4 years. So even if you're graduating this year or next year, you still have a window to come to Australia. All right. And a pathway for industrial pharmacist, that's another pathway which is open at the moment, where our colleagues who has done like 3 years or 4 years experience in industry, and if you build your profile and submit to Vitasis, which I'll explain to you in my next slide, then you can apply without Kaps exam and come to Australia as an immigrant. All right. So there are 2 windows which available other than Kaps. One is pharmacy technician, other is industrial pharmacy with no exams is involved. But if you're coming through as a Kaps passing pharmacist, then that's a different story. So there are 3 major categories. Okay, to provide that information, so I developed that educational webinar series and videos. I used to do a lot of webinar last year or previous year, I'm a fan of making videos. I don't know why. I have a mentor who is a Tony Robbins, so I follow him. He talk on videos, but I never did that on social media. So I use that option to just spread the message. Many pharmacists may think that he's making money out of YouTube channel, or no, I'm not making any money of any of my social media, but it's just a way of reaching or communicating to international students. So these are the things which someone can take a photo. If you want, you can connect with me later on. All right. So this is something which I disperse information. I help so many pharmacists just through my TikTok messages, because TikTok is the fastest message spread communication at the moment. It's been proven. But I know many people don't like TikTok, but I use TikTok as a medium to spread the information. All right. And okay, visas. What type of visas one can apply if you coming to Australia? Please take a picture of this. There are different types of visas available for pharmacists if they're coming after passing the Kaps. Most easily achievable visa is that
491 visa, which is written in the bottom, which is called Skill Work Regional Provisional Visa, subclass 491, state and territory nominated visa. This is the visa, I call this visa as a lottery visa. You know lottery? Lottery mean के आपने टिकट खरीदा और आपको लक है कि आप लग जाएं, आपको लगे वो, लेकिन ये कैप्स पास करें, ये वीजा आपको ऑस्ट्रेलिया ला सकता है within 3 to 4 months after passing the कैप्स. Okay? तो मेन मकसद है कि आप इस कंट्री में आए, काम करें और अपने प्रोफेशन को ग्रो करें, लीडर बने इस प्रोफेशन में, और आगे आने वाले टाइम में आपका जो भी इनकम होगी उसमें से कुछ पोर्शन आप अपने घर भेजेंगे, तो वो एक समझे एक रिजर्व पाकिस्तान को हेल्प करेगा. तो दिस इज अ बिगर पिक्चर, बिगर बेनिफिट व्हिच वी कैन सी. बट अगेन वी आर ऑल फार्मासिस्ट, राइट? सो आई वुड लाइक everyone to working in community pharmacy. If you have different thoughts, if you're doing PhD or pathway of MPhil, stay connected, whatever you're doing, but stay connected with the community pharmacy, because that's the real essence of pharmacists. Please take a picture of this slide, and some candidates may be interested that why not we go for a permanent resident visa, which is the first visa written here is 190 visa. Okay, the reason is that 190 visa is also available, which is going to give you a lot of benefits like Medicare facility and some lot of benefits, but that visa take a lot of time. Like time frame of that visa duration assessment is long. You need to wait longer, maybe a year, maybe 7 months, 8 months, but 491 is very quick at the moment. So I'm very fond of telling people that, look, take it, which is available, just take it. Why not? Just don't wait for that, because you will be better off if you're working in Australia as compared to working anywhere in the world, because you will be earning in dollars, right? You will be living in a modern country by doing this, rather than apply for top quality visa and wait for a year or 2 years. Better to get in here and start earning and start getting experience. There will be a lot of hurdles when you come. There will be a lot of English accent, a lot of Aussie differences that you will feel in the culture as coming. So you need to start thinking that if you're starting the process right now, if you think that you want to be in Australia, start thinking that you are now in Australia. Start watching Australian television. Start watching how Australians speak. Start watching what is happening in pharmacy industry world. I can give you some links of some news channels or pharmacy stuff that you can start thinking that you are already in Australia. Okay, so this is a part. This is the second slide about pharmacy technician. Again, if someone want to pursue their career without a Kaps, if someone has a degree of pharmacy, for example, and if they have worked in pharmacy in retail, and if they can prove that, if they can put the application as a technician, then this visa is for those categories, those people. Or if you have done a lower study, which is called diploma in pharmacy, probably you know better than me. In Australia, this call is certificate 3 and certificate 4 qualification, which is not a pharmacy degree. They are diplomas, they are little courses, and on the base you can work as a pharmacy technician. So if someone can balance that qualification from Pakistan, then they can apply for this visa. And at the moment, 491 visa is available quite easily for them. They are in our groups, in our WhatsApp group, there are a few energetic, smart pharmacists who listen my webinars probably January 2023, and they just action it straight away. And most of them have now applied for the visa. So you can see the time duration. January 23, they come into my webinar first time, or maybe first week of February, and they took the action and they now applied for the visa. It's May. So it's like in 3-4 months, they have done everything. Assessment, PTE, all the experience letter and this and that, and apply for the visa. And they will be here in Australia very soon. So if you are a person who got to take action, then I'll be helpful for you. If you're going to listen and not taking an action, then obviously it will be like a small story that I'm telling. So it's time to take action if you want to pursue. So this is another category, and I'll go for, no, I've already shown that one, industrial pharmacists. Friends who are
pharmacist and worked in industry, I know there are many friends that we have in Pakistan. They can take this advantage. 491 visa again is available for them if they prove their work experience letters from the companies and match that Australian criteria of industrial pharmacist. This number, which is 25152, if you go on Vitas's website, just Google this VETASSESS. If you Google that and find the demand list and see, when you see this industrial pharmacist, take a printout of the sheet and see what experience they want you to show in your experience letter. There's a list of job description, there's a list of qualification, there's a list of work experiences. It all says in black and white there. Or if you come to my group, I can give you to that sheet straight away. So there are some friends, some pharmacists who already arrived here in Australia through this process, no Kaps exam. And what they have done this 491 visa. They have not touched any of the top visa because they knew, they were aware, they were very clear, very clear that they need to come to Australia. So they just used that option, which is very friendly at the moment. I call this visa as 491 visa, lottery visa for pharmacists. So they use that option. All right. These are the slides. These are the documents which you can download from this website, Vitasys. So I have downloaded that just to show what are the job responsibilities, what are the documents, what are the skill criteria that required. It says that you need to have that AQF, which is Australian qualification. I don't know what is meant by F, but it's like minimum qualification. They call it certificate for pharmacy technician, and work experience of 1 year, then they can apply. All right. I'll show you the industrial pharmacist. This is industrial pharmacist document. You can easily download it. Anyone can download it. That it says bachelor's qualification is required, which already available for pharmacists in Pakistan. That is as good as for this degree. And then experience, it says minimum 1 year experience, and then you can submit your Vitasys assessment. Okay. Yeah, that's it. So this is a little bit about those options, and I'll just open my other slide. Is this available? Can you see my other slide, or maybe I'll stop it and I'll show you. There's another presentation. Please confirm when you. Yes, sir, it's visible. It is visible? It's visible. So that's the slide which. Okay, this is. It just says the topic which we have highlighted for the webinar: pharmacist pathway to Australia, a scope and opportunities for pharmacists, especially from Pakistan to Australia. A little bit about me. As I said, now I'm going to show an example or show you what are the bodies involved if you actually pursuing your career to Australia. Maybe I would request everyone to understand, to write notes when you're watching me or describing me, maybe take photos. I would love if you can write down your notes, and because it's easier for you to recall as well, and also you can explain to other person. So if you learn in a way that you can teach to someone else. So I will be talking about authorities which are involved in pharmacy profession in Australia. I'll be talking about some examples of pharmacists, overseas pharmacists in Australia. I'll be talking about some time and cost involved in this process to registration in Australia, and different areas of scope and future. I've already talked about the future in the start. So to explain, to express my feeling that why we're doing this webinar. So this is very important, future outlook of pharmacists in 2023 or later on. So I have already described a few things earlier, and scope and opportunities of pharmacists in rural. I have shown you the window a little bit. Let's see what is the first step. So if, for example, when you come out from university, when you have your pharmacy qualification, your degree,
and you applied for pharmacist registration in your state. In Karachi, I would say Sindh Pharmacy Council, or in Punjab, it's normally Punjab Pharmacy Council. So those things which you need to make ready before coming to APC website. APC mean Australian Pharmacy Council, which got a very nice website, very friendly people, very easy to going in communication people. If you write an email, even if you call them, they will answer you, because they know that pharmacists are required from overseas in Australia. So that's don't hesitate to contact them. Okay, if you have any question. The Australian Pharmacy Council, what does it do? It's actually a body which accreditates pharmacy education and training in Australia, and also look after the New Zealand side on behalf of Pharmacy Board of Australia and Pharmacy Council of New Zealand. So this is the body which actually check your documents if you're coming from different country. Either you're coming from India, you're coming from Zimbabwe, you're coming from UK, if you're coming from Canada, if you're coming from USA or any other country. This is the body, the first contact body is this one. This is not a licensing body. This is just the educational assessment of your qualification. Your degree, like my degree was from the University of Karachi. I met a professor during 2003 in a lecture, and I was not aware. I just came to know on that day that he was the chairperson of APC. He was my professor. So I was just telling him that, okay, sir, mujhe ye Kaps ka exam karna hai. So he looked at me, he said, okay, which university from Pakistan? I said, I'm from University of Karachi. And he looked up in the sky and said, oh, it's a good institution. You can do it. So he was aware what his Karachi University was. That Aussie guy, Aussie chairperson, was aware of our university back in 2003. So now what APC have done, they have processed so many pharmacists from overseas that they have gathered all the information, all the names of university, even every Pakistani university which is approved by Pharmacy Council in Pakistan or Pharmacy Council, those universities are in the database. So when you're putting your application in Kaps, right, you put your name, you put your this, that. When you choose which university from Pakistan, it will show you all the universities there. So that depth they have worked in their system. So you can feel that, oh, if you're from University of Karachi, or if you're from your university, that university will appear there. Meaning that half job is already done, that you are not unknown to Australian society, Australian pharmacy system. And that makes, I feel quite confident that they have done that big job there in the end, right? And now, mean that your degree is not directly acceptable, but you just need to pass the exam. So that's something which really highly encouraging for our friends who are listening me. Okay, so document evaluation, which require few things like your degree and mark sheet, the pro forma, and third document is the Pharmacy Council letter. Okay, skill assessment through competency-based exam, right? Those APC have divided two different, like they put third world country and the first world country aside. So they put a stream A and a stream B. So we come under stream A, and all the other countries like UK, Canada, Ireland, New Zealand, they come into stream B. Only difference is that they have similar exams, but being they're coming from that part of the world, they need little less training. They only need 3 months training, supervision training or internship training. As compared to stream A, they say that, oh, your country may have different rules and regulation. That's why you need to complete 1,800 hours training, which is approximately 11-month internship training, which is a paid training, which is a paid job. So that's the only difference. And the written exam is quite similar for COP or Kaps candidates. Okay, the next body after that is called Pharmacy Board of Australia. Pharmacy Board of Australia does registration of a pharmacist and a student as well. When they're in university, they got registered with the Pharmacy Board in the first. Just so you can imagine, there's a slight difference. In university, I know that, I'm not sure, sorry, I'm not aware about Pakistani system at the moment, but students, when they go into university of the first year,
they get to satisfy pharmacy board that you are an honest person. They need to submit a police clearance. They need to submit direct documentation to pharmacy board that you are studying in pharmacy first year, fourth year, and becoming pharmacist. So these pharmacy board are involved from that basic level. Okay. They develop standards, codes, guidelines for pharmacy profession. Notification and just complaints. If any Australian local person is not happy with a pharmacist, they can pick up a phone and complain to the pharmacy board. That's so easy in Australia. And when this happens, it's going to be a nightmare for a pharmacist. So we need to work very nicely in Australia. We can't go out of those guidelines. We are restricted. We are honest. We are trustworthy. So these guidelines make us, when we read those guidelines, then we understand that we need to stay in the boundaries. Okay. Assisting overseas trained pharmacists or practitioners who want to work in Australia, and approving accreditation standards and accredited courses for study. Even pharmacy board look after the courses they're teaching, like universities teaching. They also keep an eye on the courses as well, what we are teaching in Australia. Okay. And then the third body is called APRA, Australian Health Practitioner Regulation Agency, which is AHPRA, which is a body which gives you the license to work in Australia. So after passing the Kaps, APRA comes. Okay. And this is the body which gives you the registration to work in Australia. First, we passed the Kaps exam. We applied for provisional registration. Once we get into a job here as an intern pharmacist, we work as a provisional registered pharmacist. Once we complete the Viva oral exam in the end of our training, we get the full registration to work as a registered pharmacist, independent pharmacist through this body, APRA. So APRA is like our MyBap in Australia. If APRA is not happy, then you are nowhere in Australia as a pharmacist. Okay. And this applies for every health professional, doctor, nurses. Yes. So this actually control every health professional in Australia. If you have relative in Australia who's a doctor, who's a GP, who's a consultant, who's a nurse, who's a physio, who's a cardio, who's a dentist, they all come under this body, APRA registration. Okay. I hope I'm making it easy for you to explain. Okay, so come to the documentation evaluation. Come to the documentation evaluation. हम documents कैसे submit करते हैं? बहुत ही easy है. APC की website पे जाइए और आज भी जाइए, आज भी होकर आइए. अपना candidate portal कोई भी बना सकता है. Even कि आप student नहीं है तभी बना सकते हैं. Just make your portal. Just play with the website. Okay, and if you have 5-year pro forma degree, just scan it. Attach it. No HEC attestation required. So easy. Because why they don't need HEC requirement? Because they have done the research on our universities. When you're picking up the university, they know from where this was issued, and they can easily verify that is it a real one or is it a jali one. So that's why they don't need any attestation. Some people think that I know there are so many pharmacists I'm talking from last many years, and many people have so many limited beliefs. They say that कि हमारी documentation HEC से होनी चाहिए. हाँ, HEC से होनी चाहिए, लेकिन Kaps को नहीं चाहिए. जो विटासिस बॉडी है उनको चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ है. विटासिस को फार्मेसी इंडस्ट्री वाले को जब डॉक्यूमेंट असेस करने या फार्मेसी टेक्नीशियन वाले के डॉक्यूमेंट असेस करने, देन आपको वो HEC को अपना जो इस्लामाबाद में जो आपको पीछे स्टैम्प करानी होती है वो कराना है. इनको जरूरत नहीं है. आप जैसे उठाएं स्कैन ठक और अपना स्कैन कॉपी अटैच कर दें उसकी फाइल के अंदर जाके. ठीक है, तो बहुत ईजी है. ठीक है, ये काम विद इन 1 आवर किया जा सकता है. अगर कोई आज बैठा हुआ जिससे माइंड इसका तैयार हो जाए ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, तो ये काम आज भी हो सकता है. कोई ये काम डॉक्यूमेंटेशन का अपना लोड कर सकता है. स्कैन करें, अपना पोर्टल बनाएं, और अगर पोर्टल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इनको ईमेल करें कैप्स को. वो उसी वक्त आपको अगले दिन वर्किंग डे में आपको सॉल्व करके भेज देंगे. अगर कोई एरर आ रही है आपके पोर्टल में, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दैट्स सो इजी. ठीक है ना. वर्क एक्सपीरियंस नहीं देना इनको. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर वर्क एक्सपीरियंस. They only interested in your undergraduate degree. That's it.
आपका एमफिल, आपकी हायर डिग्री, आपका एमबीए, उनको कोई उससे मकसद नहीं है, कोई लेना देना नहीं है उनको उनसे। आपकी फार्मेसी जो डिग्री है ना, फार्म डी या बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, अगर किसी ने पहले ज़माने में किया है वो भी मानते हैं ये लोग, क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर फार्म डी नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया भी अभी भी यूनिवर्सिटी जो है वो बैचलर्स ऑफ फार्मेसी की डिग्री दे रही हैं इस वक्त, एंड दैट इज एज गुड एज टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया एज ए फार्मासिस्ट। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि can I ask a question with audience if someone can answer that? That's very important for me to know कि I'm talking to some energetic people. मुझे ये पूछना है कि किसी को पता है कि अगर किसी ने फार्मेसी की डिग्री ऑस्ट्रेलिया में पढ़नी है तो क्या कॉस्ट आती है बैचलर्स ऑफ फार्मेसी पढ़ने की, 1 साल की या 5-4 साल की? Does anyone know about that? Okay. आई थिंक पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट, या इससे भी ज्यादा होगा। ये किसने बताया? इकरा मुबीन ने बताया। इकरा मुबीन, जी सर। 2 करोड़ रुपया आपने बताया? जी सर। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और कोई सुनने वाला? यहाँ पर इजाजुल्लाह ने भी मेंशन किया है 200,000 AUD। अच्छा, ओके, ये उन्होंने चैट पे लिखा है? जी जी। अच्छा, ओके, इसका मतलब है कि लोग बड़े ही अप टू डेट है इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं तो समझ रहा था कि कोई बैकवर्ड ज़माने में सब रहते हैं, सबको पता है, इसका मतलब है। दैट्स वेरी गुड। तो इसका मतलब हमारे लिए देखें, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि देखिए, हम कैप्स को करके अपनी जो पाकिस्तान की डिग्री है उतने वैल्यू की कर सकते हैं जस्ट पासिंग द कैप्स एग्जाम, 2 करोड़ रुपए की। ठीक है ना? तो 2 करोड़ तो नहीं खर्च हुए होंगे ना आपको पाकिस्तान में क्वालिफिकेशन हासिल करने में? मेरे ख्याल से लाखों में खर्च हुए होंगे, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन पर इवन प्राइवेट्स में भी आई डोंट थिंक कि 2 करोड़ तक जाता होगा। गवर्नमेंट्स तो ऑफ कोर्स आर हाईली सब्सिडाइज्ड, बट प्राइवेट्स में भी आई डोंट थिंक कि 2 करोड़ तक जाता। तो ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ मोटिवेट करने के लिए कि जब आप इस पाथवे पे जा रहे हैं, इस कैप्स के पाथवे पे जा रहे हैं, बड़ा कड़वा घूंट लगता है कैप्स का कि भाई फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, पैसे ज़ाया हो जाएंगे। पीयर फैक्टर होता है कि हमें तो पता ही नहीं एग्जाम का कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो वो जो फियर फैक्टर है ना, वो किस तरह हम वाइप ऑफ करें अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट में से। तो उस फैक्टर को दूर करने के लिए मैंने क्वेश्चन किया था कि चले अगर जम मारे, हिम्मत करें, रिस्क लें इम्तहान देने का, तो अगर पास हो गया तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगी? पूरी आपकी फैमिली को होगी, पूरे आपके पेरेंट्स को होगी, आपकी मेरे ख्याल से जो भी आपके दोस्त होंगे वो आप पे अश अश करेंगे, अरे भाई क्या काम किया है यार आपने। आपने कैप्स का इम्तहान, मतलब जिसको हम समझते हैं कि बड़ा ही भयानक सा इम्तहान है, उसको आपने ओवरकम कर लिया। तो दैट्स अ ह्यूज वैल्यू। वैल्यू देखें, आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी आपकी क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो डॉक्टर जैन भाई से मैंने ये कहा था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में आके बस वही काम किया जिसमें वैल्यू थी। तो मैंने कोई मैं पीएचडी करने नहीं किया, मैं करना चाहता था, मैं कर सकता था, लेकिन आई जस्ट वेंट टू दैट वे कि चले हम जॉब्स क्रिएट करते हैं, हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो मैं उसी में बिजी रहा। और देखें, अब मैं तुम्हारी ऑडियंस से बात कर रहा हूँ तो आई कैन मेक अ डिफरेंस इन अदर्स लाइफ। तो स्किल असेसमेंट, अगर कोई फार्मासिस्ट सुन रहा है आज, तो वो अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो वो आज अपना ये डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। और ये $1300 की जो मैंने स्लाइड दिखाई है, ये उनकी फीस है, इसमें मुझे कमीशन वमीशन नहीं मिलता। ये बिल्कुल ना समझ में रखिएगा कि मुझे वो कोई इनाम देते हैं या कोई मुझे पैसे देते हैं या मुझे कोई तमगा देंगे, उस पर कुछ नहीं। ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। और मैंने तो क्योंकि इसमें ना असेसमेंट टाइम लगता है। असेसमेंट में मतलब कि वो डॉक्यूमेंट लेते हैं, तकरीबन 4 to 8 वीक्स के करीब या 12 वीक्स के करीब वो इस वक्त ले रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें। और मोस्टली वो पासपोर्ट को वो वेरीफाई कर रहे होते हैं कि ये जो पर्सन ने डिग्री दिखाई है ये वही है या किसी और की डिग्री तो नहीं दिखा दी। वो ये चीज़ें वेरीफाई कर रहे होते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर। तो ये और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए इसके अलावा? 3 डॉक्यूमेंट ये होगा एजुकेशन के, और साथ में आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट हो आपका, CNIC हो आपके पास, और जो कि फोटो और ID लगा हो उसमें आपका।
और साथ में एक और डॉक्यूमेंट, वो बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं। अमूमन पाकिस्तान में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, क्योंकि शायद हम लोग के कल्चर में इतना उसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो फंस जाते हैं, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट तो है ही नहीं। तो मैं उनको कहता हूँ जस्ट लीव द बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई थर्ड डॉक्यूमेंट है आईडी के तौर पे, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है किसी का, तो वो यूज कर लें। जस्ट डोंट सिट डाउन कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना एप्लीकेशन ही ना सबमिट कर सकें। तो देयर इज वेज टू गो इनटू दैट। और एक फोटो शायद वो चाहते हैं, तो फोटो आप आईफोन से, आप ये जो भी फोन है उससे आपने बना ली, तो ये आपका एप्लीकेशन तो सबमिट हो गया, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, एग्जाम कैसे करना है। एग्जाम को करने के लिए बुक करना होता है एग्जाम। अच्छा, एग्जाम जो है पाकिस्तान में अवेलेबल है। बड़ी खुशी की बात है कि एग्जाम जो है इस वक्त कराची में नहीं है, लेकिन बाकी सब जगहों पे। हमारी बड़ी कोशिश की है कराची में भी खुल जाए। कराची में खुल जाएगा एग्जाम सेंटर, लेकिन इस्लामाबाद में 2 एग्जाम सेंटर्स हैं, और लाहौर में भी एक नया सेंटर बना है। तो ये 3 एग्जाम सेंटर हैं, जिसके अंदर 3 डेट्स के अंदर जुलाई में इम्तहान हो रहा है। अभी जुलाई जो आने वाला है, ठीक है। और इसके बाद नवंबर में एग्जाम होने वाला है, और उसके बाद फिर मार्च में। तो ये साल में मार्च, जुलाई एंड नवंबर में एग्जाम होते हैं। और मेरी एपीसी के हेड से अभी बात हुई थी, तो वो जस्ट वेट कर रहे हैं कि हमारे कितने कैंडिडेट्स अपने पोर्टल बनाते हैं और अपनी असेसमेंट भरते हैं, और ये उनको बताएं कि वो कराची में देना चाहते हैं तो वो कराची में भी एग्जाम सेंटर ऑन कर देंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने होमवर्क किया हुआ है अपना, ठीक है। हमें जस्ट कैंडिडेट का एक पूल बताना है, या हम उनको ईमेल करवाएं अपने स्टूडेंट्स से एपीसी को कि यू आर रेजिडेंट, you are a fresh graduate, you want to write exam in Karachi, and they will, if we can show that there are 60 or 100 Karachi resident students want to sit in the exam, they can start the center in Karachi. Not a issue. तो ये आप अपने एंड पे कर सकते हैं। पोस्ट सर्वे करवा सकते हैं, मेरे पास एक सर्वे बना हुआ है, वो आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने कूलीज को दे सकें कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है, लेट्स से वो प्लान कर रहा है कि नवंबर में डेट एग्जाम की लेनी है, या अगले साल 2024 में लेनी है, या उससे अगले साल लेनी है 25 मार्च में लेनी है, तो उस पर क्लिक कर दें उस सर्वे के अंदर। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रहा हूँ अभी, और वो मैं सारा डाटा एपीसी को भेज दूंगा। क्योंकि जो अभी लाहौर में और इस्लामाबाद का सेकेंड सेंटर है, उसको जब हमने खुलवाने की कोशिश की थी, तो उसमें इसी तरह का मैंने सर्वे करवाया था। सर्वे के बाद हमने ट्वीट्स करवाए थे अपने स्टूडेंट से, जो हमारे कोलीग्स थे। मैंने एक सैम्पल ट्वीट दिया था, उसमें हमने ट्वीट में टैग किए थे, हमने एपीसी के जो मेरे ख्याल से सीईओ है उनको टैग किया था, और बाकी दोनों कंट्रीज के हाई कमीशन को टैग किया था हमने। और उनसे डिमांड की थी कि वी आर फार्मासिस्ट इन पाकिस्तान, वी आर वांट टू कम टू ऑस्ट्रेलिया, बट द एग्जाम सेंटर कैपेसिटी इज वेरी लिमिटेड, कैन यू इंक्रीज द एग्जाम सेंटर। सो विद इन 3 वीक्स में हलजुल हुई, उन्होंने इधर उधर कॉल्स की, और एग्जाम सेंटर को उन्होंने हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मेरे तो नहीं, एग्जाम सेंटर अब खोल दिया उन्होंने लाहौर में, और इस्लामाबाद में सेकेंड। तो वी गॉट 3 सेंटर्स। तो हम कराची के लिए बिल्कुल रेडी हैं करने के लिए। तो आई विश कि नवंबर जो 22 आ रहा है, उसमें हम कराची में भी एग्जाम सेंटर देखें। हो सकता है 2 एग्जाम सेंटर खोल दें, अगर हम डिमांड इतनी क्रिएट करते हैं अपने एंड से, आपके फोरम से। तो उस सर्वे में मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करवाइए। अब जस्ट एक सिंपल सा फॉर्म है वो, और वो किसी और मकसद के लिए नहीं है, वो सिर्फ उस इंफॉर्मेशन के लिए कि वो केपीसी को दें हम। और कराची का सेंटर, आई विश कि आई कैन हैव 2 सेंटर्स अप्रूव बाय एपीसी फॉर, क्योंकि माशाल्लाह से इतने ग्रेजुएट्स हमारे यहाँ मेरे ख्याल से आना चाहते होंगे ऑस्ट्रेलिया, या बाहर जाना चाहते होंगे। तो व्हाई नॉट ऑस्ट्रेलिया, जब ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़े ईजी है। बहुत सारे लोग नॉर्वे जाना चाहते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो नॉर्वे ना जाएं, क्योंकि वहाँ इंग्लिश से दूसरी लैंग्वेज, नॉर्वेजियन लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, वो सीखना पड़ता है। तो मैं जब भी कहीं वोकल होता हूँ फार्मासिस्ट कॉन्फ्रेंसेस में, मैं बढ़ चढ़ के बताता हूँ कि pharmacists from Pakistan are hard-working pharmacists. Pharmacists from Pakistan are well versed in English, because our medium of studying student life is from schooling is all English. Universities जो है वो सब English पे तालीम देती हैं, as compared to many other countries जहाँ पे English नहीं बोली जाती उनके undergraduate institutions के अंदर। तो उन बच्चों से हमारे यहाँ के बच्चे बहुत बेहतर होते हैं। एंड ट्रस्टवर्दी, हार्ड वर्किंग नेशन है हमारी पाकिस्तानी। तो ये चीज़ें जब मैं बोलता हूँ ना पॉलिटिशियन के सामने, तो उनको अंदाजा होता है कि ये जो कह रहा है कि इसमें वजन है। और मैं भी खुद पाकिस्तान से हूँ, तो आई ऑलवेज कैरी 2 बैजेस ऑन माई जैकेट।
one Australian and one Pakistani. So that's something which I do to not to show off, it's just to advertise के अगर आप देख रहे हैं हमारे जैसे लोगों को, तो ऐसे और भी इस कंट्री में आके डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को सवाल होगा कि हम पढ़ाई कैसे करें, कैप्स का इम्तहान कैसे पास करें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन डॉक्टर राफी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। जी सर, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूँगी कि इट वाज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, सो थैंक यू सो मच फर्स्टली तो फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन। you have actually addressed a lot of questions, मतलब I was writing them down और फिर आप वही explain कर रहे थे, तो your session was very very understanding for students कि अगर आपने गौर से सुना है तो जो सवाल आपके हैं वो एड्रेस हो गए हैं। एनीवेज जो और क्वेश्चंस है मैं उनको भी बात करना चाहूँगी। सर एक पर्सन है, उन्होंने ये मेंशन किया है कि उनके कैप्स के अंदर 65 पॉइंट्स आए हैं, तो वो वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वीजा मिल जाएगा, उसके साथ क्या सिचुएशन है? ओके, देखिए हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ कैप्स डू यू रिक्वायर बेसिकली? देखिए एज ए फार्मासिस्ट, एज ए मेंटोर, ये जो वीजे की जो पॉइंट्स वाली बात है ना, वीजे की जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे मुझे एडवाइस करने की इजाज़त नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये एक एरिया, स्पेशलाइज एरिया है माइग्रेशंस का। ठीक है, और इसको बेस्ट आंसर कर सकते हैं जो यहाँ के कंसल्टेंट, जो अप्रूव रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है। हर एक कंसल्टेंट पाकिस्तान के कंसल्टेंट को मैं नहीं मानता, लेकिन जो अप्रूव रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन से जिन्होंने क्वालिफिकेशन ली हुई है वो कर सकते हैं। क्योंकि अभी 4 दिन पहले मुझे बुलाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन ने मुझे मीटिंग की थी, उनके यहाँ के रीजनल हेड्स ने जो कि वीज़े इशू करते हैं, तो उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया था कि वो मेरे इस काम के बारे में जानना चाहते थे और ये चाहते थे कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट की जो नीड है वो हम फुलफिल तो कर ही रहे हैं। उनको मेरे काम के बारे में पता चला, तो उस मीटिंग को वो सुनते रहे, बहुत देर बात करते रहे, और आखिर में 2-3 बड़ी बड़ी पॉइंट की बातें की। उसमें से एक पॉइंट ये भी था, उन्होंने कहा कि इरफान, डू यू नो दैट you are not authorized to advise on any visa thing। मैंने कहा मुझे पता है, नो दैट। तो मैंने कहा मेरे साथ राइट और लेफ्ट 2 इमिग्रेशन कंपनीज हैं जो कि मुझे कोई कमीशन नहीं देती हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उनको रेफर कर देता हूँ कि भाई इनसे बात कर लो। एक है यहाँ पे उवैस साहब, एक है यहाँ पे ब्रिस्बेन में, और एक जहीर खान साहब है। तो आई जस्ट गिव देम, बिकॉज वीजे पे मैं कुछ कह दूं पहले तो मुझे इजाजत ही नहीं कहने की। फार्मासिस्ट पे जितना पूछना है पूछें, फार्मेसी एग्जाम कैसे पास करना है वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो वीजे की जी जी अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बी कैटेगरी और टेक्नीशियंस के हवाले से बात करी थी, जो आपने काफी एड्रेस कर दिया है, तो आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दैट फर्दर। फिर इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन फार्मासिस्ट पे भी आपने बात कर लिया सर, अगेन दैट इज नॉट मच रिक्वायर्ड। अच्छा, उसके बाद सर क्या प्रिपरेशन के हवाले से है, स्टडी मटेरियल्स के हवाले से है कि हाउ टू प्रिपेयर एंड स्टडी मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे उसका? जी, दैट्स माय एरिया। देखिए, मैंने कैप्स की एजुकेशन, बहुत सारी एकेडमीज खुली हुई हैं यहाँ पे जो कि हाईली कॉस्टली है। ठीक है, तो उस चीज को मैंने समझ लिया था कि देयर इज नो पॉइंट कि हम अपने मैसेज भी दें और उनको बोलेंगे वो इन एकेडमीज में जाके ज्वाइन करें। तो आई गैदर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि एग्जाम पास कैसे करना है, उसको क्रैक कैसे करना है, उसको वर्ड क्या यूज किया जाता है, क्रैक कैसे करना है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करनी है 3 महीने की, जस्ट हार्डली। जो मटेरियल हम देंगे वो हमारे पास से मिलेगा, और उसमें आपको 3 महीने पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ें। फुल टाइम जॉब करते हैं वो भी कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब करने वाली मदर्स भी पास कर चुकी हैं हमारे साथ एग्जाम, मतलब मदर्स, उनके बच्चे 3-3 हैं एंड दे पास द एग्जाम इन 3 months टाइम। ठीक है ना, तो हम उनको स्ट्रेटजी बताते हैं अपने एक वेबिनार के अंदर, और ये जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई हमारा कोई लेना देना नहीं है पैसे का। ठीक है, तो जस्ट एवरीवन लिसनिंग टू मी, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है आपने। ठीक है, उस स्टडी मटेरियल को हर एक टच नहीं कर सकता। कि अगर कोई बोले ना कि मैं स्टूडेंट हूँ, उनके लिए मैंने एक स्पेशल चीज बनाई है, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया है कि हम फाइनल ईयर के अंदर हैं, हमें कुछ नहीं पता हम क्या करें। तो मैंने उनको कहा ठीक है, आई विल डू समथिंग स्पेशली फॉर यू एज वेल। तो दैट्स व्हाई मैंने जैन भाई को सवाल किया कि हम ये कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आपके यहाँ स्टूडेंट्स बहुत होंगे डेफिनेटली, और ये जो हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं जो कि अगले आने वाले साल में ग्रेजुएट होने वाले हैं। तो उनको अगर हम अभी से उन ग्रुप्स में एंगेज कर दें पढ़ने के लिए, उनको वो चीज़ें हम प्रोवाइड कर दें, तो वो अपना सेमेस्टर की तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन अगर वो 2 घंटे भी उसमें से निकाल लें रोजाना की, या हफ्ते में 3 दिन भी, तो देन इजीली प्रिपेयर फॉर देम फॉर द एग्जाम। और जैन भाई से मैं कहना चाहूँगा कि अगर
आपके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके लिए अगर आप कोई अपने फाइनल ईयर के सेमेस्टर में कोई ऐसी एडिशनल चीज़ें कर लें, कुछ इस तरह का कुछ कर लें कि वो बुक्स जो कि रिकमेंडेड है पढ़ने के लिए, या उस इस तरह का एग्जाम जो कैप्स में आता है उस तरह का एग्जाम पेपर रख लें, तो उनको वो चीज़ें पढ़ा दी जाएं और वो उसको अगर पढ़ के 3 महीने पढ़ के बहुत ही लाइट लाइट वेट में, और वो आप फिर इंटरनेशनल मार्केट के लिए आप स्टूडेंट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उस तैयारी से आपका स्टूडेंट जो है वो they can easily pass the Australian pharmacy exam, they can easily pass the Canadian pharmacy exam as well, because these exams are quite similar. इवन की जो मिनिस्ट्री ऑफ दुबई के एग्जाम होते हैं वहाँ भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हमारे पास ग्रुप्स में, जैसे कि हमने एक एलीट स्टडी ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हमने ये कोशिश की है कि वो स्टूडेंट आए जो अपनी बोर्ड्स को ना जला चुके हों पीछे से, कि बस उन्होंने फोकस किया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया आना ही आना है उन्होंने विद इन 6 मंथ्स। तो उस स्टडी ग्रुप में आने के लिए आपको पहले तो शर्त होती है कि हमारी, कि आप कैप्स का असेसमेंट जमा करा दो और हमें प्रूफ दो कि हाँ आपने असेसमेंट कर लिए, कि मीन के यू हैव जम्प्ड इनटू दैट, कि ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो, नहीं, सोचने वाले लोग नहीं चाहिए हमें, सीरियस लोग चाहिए जो इसको करने वाले हो। तो उस तरह के हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और स्टूडेंट्स के लिए मैंने किया हुआ है कि वो एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि वो हमारे एजुकेशनल चैनल्स के साथ कनेक्टेड हो, ताकि उनको वेल इंफॉर्मेशन अप टू डेट रोज की मिल रही हो, और जब रोज की इंफॉर्मेशन उनको मिल रही होगी देन दे नो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे कभी कोई वीजे की बात कर दी, कोई नई पॉलिसी की बात कर दी, तो दे आर कनेक्टेड विद मी। तो जब वो कनेक्ट होंगे ना, तो उनको उनको समझ में भी आएगा कि अच्छा आज मैंने ये नोट्स रिलीज किए हैं, तो इसको उनकी सिग्निफिकेंस होगी कि अच्छा ये हमने पढ़ लेना है, और हमने अगले 2 वीक्स में वेबिनार कर रहे हैं उसमें आके डिस्कस कर लेंगे, तो हम उसमें ये बात करेंगे अच्छा आपने क्या पढ़ा उसके अंदर, अच्छा नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लो। तो हम ये इस तरह का हमने एक रखा हुआ है कि जो स्टडी ग्रुप्स है ना उनके लिए एक अलग वेबिनार करते हैं, उसमें कोई बाहर से नहीं आता, उसके अंदर सिर्फ वो लोग होते हैं जो हमें, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको अच्छे तरीके से जानता हूँ। अच्छा जैसे कि अगर किसी का नाम मुझे पता हो कि अच्छा यू लिव्ड इन, ये आपका ये एम है, आप इस बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप स्कूलिंग से पढ़े हुए हो, तो वो इंट्रोडक्शन हो चुका होता है, तभी वो उस ग्रुप में आके पढ़ते हैं, तभी उनको मजा आता है पढ़ने के अंदर, और दे कैन इजीली पास द एग्जाम। तो स्टडी मटेरियल का कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टडी मटेरियल हासिल करने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करना होगा, देन यू कैन जंप इनटू आवर ग्रुप्स। We have gold group for students, we have elite group for experienced pharmacists, and they all free. राइट सर, इसके अलावा जो एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है सर, दैट इज डेफिनेटली अबाउट फाइनेंसेस, Yes. कि वीजा से पहले कितने फाइनेंसेस, टेस्ट देने के टाइम पे कितने फाइनेंसेस, वीजा लगने के बाद कितने फाइनेंसेस, ऑल ऑफ इट बेसिकली आप फाइनेंसेस के ऊपर थोड़ा एड्रेस करते हैं। ठीक है, मैं मोटे मोटे आपको फाइनेंसेस दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, अगर कोई और से सुन रहे हैं तो प्लीज इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने स्पेशली वीडियोस भी बनाए हुए हैं इसके ऊपर, एक्सपेंसेस के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब के मेरे उस पर जाके। तो देखिए, पहले जो मैंने आपको 2 स्लाइड दिखाई थी अभी शुरू के अंदर, कैप्स करने वालों के लिए 1310 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये पहली कॉस्ट है आपको अपने पेपर को असेस कराने की। उसके बाद 2330 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एग्जाम की फी है जो आपको देनी है, जो कि आप पाकिस्तान में देंगे एग्जाम। ठीक है, ये तो 2 मोटे खर्चे हो गए। इसके अलावा आपने पीटीई का टेस्ट देना है, जो कि पीटीई इस वक्त पाकिस्तान में 3 महीने की आगे की डेट मिलती है, तकरीबन 75,000 रुपए ये लोग चार्ज करते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पीटीई टेस्ट की। उसकी तैयारी का भी मटेरियल, उसके भी लिंक्स, उसकी भी चीज़ें, वो सब हमारे ग्रुप्स में हम आपको दे देते हैं। आपको किसी इंस्टीट्यूट पे जाके पैसे खर्च करने का, आपको निकल के जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यू नीड टू बी डिटर्मिन, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन स्टडिंग। कंसिस्टेंट, रोज के रोज आपने कुछ करना है, तभी ये हाथ में आएगा। अदरवाइज आपने 1 हफ्ता किया, 3 हफ्ते छोड़ दिया, तब आपकी गिफ्ट में नहीं आ सकती हैं चीजें। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो इसके अलावा वीजे को अप्लाई करने के लिए आपको स्टेट नॉमिनेशन अप्लाई करनी है। स्टेट नॉमिनेशन क्या है? स्टेट नॉमिनेशन एक गवर्नमेंट की एक नीड है। हर स्टेट, यहाँ पे कुछ 7 स्टेट्स हैं, ठीक है, जिस स्टेट में मैं रहता हूँ उसका नाम साउथ ऑस्ट्रेलिया है। मेलबर्न का सिटी जो है वो विक्टोरिया स्टेट में है। सिडनी जो सिटी है वो न्यू साउथ वेल्स स्टेट में है। पर्थ जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट में है। इसके अलावा हुबार्ट जो है वो टस्मानिया स्टेट में। तो इसके अलावा नॉर्दर्न टेरिटरी एक और स्टेट है। तो ये स्टेट अलग अलग इनकी गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स। तो इन्होंने अट्रैक्शन डाली हुई है अपने वेबसाइट पे कि हमें इस प्रोफेशन के लोग चाहिए। और मजे की बात है कि फार्मासिस्ट हर स्टेट की लिस्ट के अंदर मौजूद है, और वो ये कहते हैं कि अगर फार्मासिस्ट हमारी स्टेट में आएगा
तो हम उसको नॉमिनेशन देंगे और नॉमिनेशन अप्रूव करके देंगे, उसकी वजह से उसको पॉइंट्स बढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशन के अंदर वीज़ा लगने में। तो स्टेट नॉमिनेशन में मेरे ख्याल से वो $300 लेते हैं फीस, अगर आपको इनवाइट आ जाता है। तो ये एक छोटा सा खर्चा है $300 का। इसके बाद वीज़े की बात आ गई। जब वीज़ा लॉन्च करेंगे, आपका कैप्स पास है, आपका पीटीई पास है, आपका स्टेट नॉमिनेशन हाथ में, जस्ट अप्लाई फॉर द वीज़ा। और वीज़े की जो फीस है मेन एप्लीकेंट की, वो मेरे ख्याल से 491 वीज़ा, जो कि लॉटरी वीज़ा जो कि मैं कहता हूँ, वो अप्लाई करें। ज़्यादा 190 का ना सोचें, क्योंकि 190 में बहुत टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो उसकी जो फीस है मेरे ख्याल से इस वक्त 4,500 के करीब डॉलर की करीब मेन एप्लीकेंट की फीस है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये एक मोटा सा खर्चा आ गया, ठीक है। और फिर अगर आपके साथ आपकी स्पाउस हैं या आपके बच्चे हैं तो उनकी फीसिस अलग हैं। तो मेरे ख्याल से वो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन के, वो आप अपना कैलकुलेटर कर लेंगे। ये खर्चा है मेरा, बेसिक खर्चा मैंने आपको बता दिया, मेन एप्लीकेंट का खर्चा भी बता दिया। इसके अलावा टिकट कितने का होगा, पैसे कितने लाएं, वो फिर मैं वेबिनार में वो डिस्कस कर सकता हूँ, जो कि मैं अपने वेबिनार्स में करता हूँ कि लेकिन आपको बेसिक खर्चा मैंने बता दिया, तो ये आप विंडो पे रख लें। लेकिन ये सारे पैसे एकदम नहीं खर्च होने, ये स्लोली स्लोली खर्च होने, स्लोली स्लोली, मतलब कि ये पैसे 6-8 महीने में स्लोली जाएंगे आपके पास से। लेकिन उसके बदले में मिलेगा क्या? ऑस्ट्रेलिया में वर्क करने के लिए आपको फुल राइट्स मिलेंगे। आप स्टूडेंट नहीं होंगे, आपको कहीं दर दर जाके किसी से आपको उबर नहीं चलानी होगी, आपको सीधा जाके आपको अपनी स्मार्ट सा सीवी बनाना होगा और अप्लाई करना होगा जॉब के लिए। जॉब आपको खुद ढूंढनी है। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब शॉर्ट है तो ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉयर आपके एयरपोर्ट पे भागते हुए आ जाएंगे, यार बंदा आ गया इसको जॉब दो, ऐसा नहीं होगा। आपको अप्लाई करनी होंगी जॉब्स, और उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं वेबिनार्स में अपने बताता हूँ। तो आई टीच ऑल द एस्पेक्ट्स। तो ये आप कॉस्ट का आंसर मेरे ख्याल से। राइट सर। इसके बाद रिगार्डिंग नॉर्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो आपने बता दिया है, उस पे आप यू हैव ऑलरेडी शेयर्ड इंफॉर्मेशन। देन देयर इज अ क्वेश्चन दैट आर देयर इंटर्नशिप्स इन ऑस्ट्रेलिया अवेलेबल अपार्ट फ्रॉम जॉब अपॉर्चुनिटीज? देखिए, इंटर्नशिप और जॉब आर बोथ सेम। ये इसको बिल्कुल ध्यान से क्लियर कर लीजिए कि इंटर्नशिप का मतलब है कि फ्री में काम है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटर्नशिप्स जो कैप्स पास करने के बाद जो जॉब कहते हैं उसको, जो पहली जॉब होती है प्रोविजनल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की, उसको इंटर्नशिप का वर्ड कहा जाता है। बट इज जॉब इज बेसिकली अ पेड जॉब जिसमें $50,000 सालाना के तकरीबन पैसे होते हैं, जो कि 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पैसे होते हैं। तनख्वाह होती है महीने की 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। तो ये भी लिख लें, प्लीज नोट कर लीजिए। ये कोई फ्री वर्क नहीं होता है, इज पेड वर्क। 4,000 के करीब आपको इंटर्नशिप में पैसे आप कमा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर मंथ। राइट सर। देन देयर इज अ क्वेश्चन कि जैसे कि सर अभी आपने बताया कि कैप्स क्लियर करने के बाद, पीटी के बाद भी आप आ जाएं, उसके बाद भी जॉब फॉरेन से नहीं मिल जाएंगी, यू हैव टू सर्च फॉर देम। तो देयर इज अ क्वेश्चन कि अगर जॉब नहीं है तो क्या स्टे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में, उसका क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, जॉब्स तो स्टेट रीजन में है, तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि जॉब ना हो। जॉब नहीं होंगी तो भी सर्वाइव कर जाएगा बंदा यहाँ पे। यहाँ पे और जॉब बहुत है। मैंने आपको बताया, ऊबर, अभी बंदा ऊबर चला रहा है जो स्टूडेंट है। ऊबर जब चलाते होते हैं तो आराम से वो ठीक ठाक पैसे कमा रहे होते हैं, 5,000 $4,000 कमा रहे होते हैं ऊबर वाले भी। लेकिन क्यों? ऊबर की जब जॉब्स हैं तो आपको सर्च एग्जैक्टली ये तो करने नहीं आए। रीजन में जाएं। जॉब्स अगर आप सर्च करें, जॉब्स फॉर फार्मासिस्ट जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया, गूगल पर सर्च कीजिए, तो उसमें आपको वेबसाइट्स मिलेंगी। उन वेबसाइट्स पे किस तरह आपने अपनी एप्लीकेशन को अपने आप को सेल करना है। बेसिकली आपका सीवी इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि वो वहां पे क्लिक कर जाए। तो सीवी को अट्रैक्ट बनाने के लिए भी मैं बात बताता हूँ, मैं सीवी को अट्रैक्ट करने के लिए भी चीजें गाइड करता हूँ। मैं सैंपल सीवी सर्कुलेट कर देता हूँ कि भाई ये सैंपल का सीवी है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो भाई, इसी को देख लो, इसमें जो चीजें नहीं है वो ऐड कर लो, कोई छोटी मोटी ट्रेडिंग्स है वो ऐड कर लो, कुछ कर लो यहाँ पे आके। तो वो चीजें, वो बात की बात है। लेकिन पहली हर्डल्स क्या है, कैप्स क्या होता है, कैप्स कैसे करना है, वीजा कैसे करना है, ये करेंगे यहाँ, ये कर लेंगे तो बहुत कुछ पता चल जाएगा उस जर्नी के अंदर। राइट। एंड सर वन मोर थिंग कि बहुत सारे लोगों ने ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि हम पास्ट काफी सालों से फील्ड को सर्व कर रहे हैं एज डिफरेंट पीपल, लाइक मार्केटिंग एक्सपीरियंस से, या फिर जैसे इन्होंने भी एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, लेकिन उनकी डिग्री फार्मेसी की नहीं है। तो क्या सिंपल ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? उसका क्या प्रोसीजर है अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा है यहाँ पर? देखिए, फार्मेसी की बेसिक डिग्री होगी
तो ये आगे सब उसके चलेगा। बगैर एग्जैक्टली हाँ, बेस जो है ना, ये जरूरी है। जो नीचे जो बेस लगी हुई है ना बिल्डिंग की, वो तो हो तो ना। बाकी उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास, हम पिछले काफी सालों से काम कर रहे हैं, वी हैव दिस एक्सपीरियंस दैट एक्सपीरियंस, बट जो हम बात कर रहे हैं अभी, आई थिंक आएंगे उसके लिए फार्मेसी डिग्री इज एसेंशियल। वो आएंगे कैसे, वो यहाँ पे पहुंचेंगे कैसे, उनकी डिग्री एग्जैक्टली। उनको लेकर आएगी ना, तो हम्म। इट्स वेरी हार्ड। अब सोचेंगे। So these were majorly all the questions. If I have skipped out anybody, तो मुझे मुझे apologies from my end, क्वेश्चन लेकिन आया मैंने मैंने काफी फिर हद तक किया है। जी डॉक्टर आफिया में तो हाँ, ये भी एक पूछ रहे हैं कि ज्वाइन कैसे करना है जी जी, ग्रुप। तो मैं बताता हूँ। देखिए, ज्वाइन करने के लिए मैं, जो भी मेरे ग्रुप में आते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि ये मेरा जो मैंने फोटो दिखाई थी ना एक सोशल अपने सर्कल्स की, वहां पे कनेक्ट हो, लिंक्डइन पे मेरे साथ कनेक्ट हो, ताकि मुझे उनका प्रोफाइल, उनके माइंडसेट का पता हो। इट्स लाइक अ स्मॉल रिक्रूटमेंट, आई एम रिक्रूटिंग देम इन माय कंपनी। This is what I do. I take care of every student very carefully. I spend at least 5 minutes on the phone, or maybe 2 minutes on the phone, and tell them, look, you need to do this, 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 and you need to provide me your CV. You need to provide me a video introduction saying that who you are, why you want to come to Australia, and what is your mindset about how you're going to mix in Australian culture. Because हमें बंदे वो चाहिए ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलियन कल्चर के लिए अपने आप को देख सके, वो कैसे खड़े होंगे ऑस्ट्रेलियन कल्चर के अंदर, ठीक है ना। तो मैं उसी को मतलब मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ अपने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, ठीक है। मुझे पैसे वैसे नहीं देती ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, लेकिन आई थिंक फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ जब आ जाओगे तो यहाँ के लोगों को सर्व करना है ना, तो वो वाला माइंडसेट भी है, या आपको पता ही नहीं। अब कल मैं एक सोशल गैदरिंग में था, ठीक है। फार्मासिस्ट मेट, मुझे बुलाया गया, खवातीन के हिस्से में बुलाया गया कि फार्मासिस्ट से इनको बताएं आप जाके ना। तो मैंने कहा उनको, बोले मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं वही बात करनी। तो मैंने उनसे जाके सवाल किया कि आपने फार्मेसी कब की है, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम पहले की है। तो मुझे उनसे सिर्फ यही पूछना था कि आपका गोल क्या है, वाई यू वॉन्ट टू परस्यू योर करियर राइट नाउ आफ्टर सच अ गैप। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अगर जैन भाई से मैं पूछूंगा आपका लाइफ में क्या मकसद है, तो वो कुछ बताएंगे, तो वो सुन के मेरे ख्याल से हमें पता चल जाएगा कि वो करने क्या वाले हैं, या करना क्या चाहते हैं। तो इस बारे में मैं रियलाइजेशन कराना चाहता हूँ अपने यंग फार्मासिस्टों को कि लाइफ में करना क्या है। ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो करना क्या है, क्यों क्यों आते हो ऑस्ट्रेलिया, खाली बत्तियां देखने आनी है, या क्रिकेट ग्राउंड में मैच देखने आना है, या अपने खानदान में फोटो खिंचा के शो ऑफ करने के मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया हूँ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि आपने करना क्या है। तो अगर फोकस आपका ऑस्ट्रेलियन कल्चर की तरफ नहीं है, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो फोकस हो जाए शुरू के अंदर। तो मेरी जॉब बहुत आसान हो जाती है उसके बाद ना। मेरी जॉब ऐसा लगता है कि मैंने उनको अपना माइंड सेट बता दिया कि ये करना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर जो लोग इस चीज को नहीं कर पाते हैं ना, तो वो फिर आए बाएं शाये रहते हैं ग्रुप के अंदर भी हमारे साथ ना। उनका लेवल बहुत डिफरेंट होता है। जो इस चीज को अचीव कर पाते हैं, दे बिकम फियरलेस फॉर द एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल दे बिकम फियरलेस कि एग्जाम तो कोई चीज ही नहीं है, मतलब ये माइंडसेट पलट जाता है उनका, स्टूडेंट्स का। तो मैं ये चाहता हूँ इस चीज को करने, उनको ग्रुप में लाने से पहले। अगर बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फोन करते हैं दुबई से और कहाँ से कि यार वो हमने आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया, आप मुझे ना अपने अपने एलीट ग्रुप में शामिल कर लो। मैं कहता हूँ यार मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, आप मेरे साथ कनेक्ट तो हो, मुझे बताओ तो कि आपका माइंडसेट क्या है, वो चीज़ तो भेजो। वो फिर भी नहीं समझते, कहते हैं अच्छा हमने ना आपका फेसबुक लाइक कर लिया। मैं कहता हूँ भाई आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अ, तो वो कहते हैं मैं तो सोशल मीडिया पे हुई नहीं। मैंने कहा ठीक है आप ना हो, ठीक है ना हो, बेशक ना हो, लेकिन आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन आना मिलेगी, ही पड़ेगा। मतलब मिलेगी नहीं आपको मेरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप टिकटॉक पे नहीं होगे तो आप मुझे देख ही नहीं पाओगे। मेरे साथ बहुत सारे एलीट ग्रुप में हमारे कुलीग्स हैं, मैं उनको कुलीग्स कहता हूँ, मैं उनको स्टूडेंट नहीं कहता, मैं उनको कुलीग कहता हूँ, मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, इसलिए कि दे रिस्पेक्ट मी लाइक ट्रस्टवर्दी पर्सन। दे बिलीव इन मी कि मैंने उनको जो पाथवे बताया है वो उनके लिए लाइफ चेंजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाला है। ये लाइफ चेंजिंग इन्वायरमेंट एपिसोड होने वाला है उनकी लाइफ में। दे ट्रस्ट मी लाइक एनीथिंग। So that trust need to be developed to come into my elite group, to come to my gold group. तो किसी ने पूछा है ना कि गोल्ड ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, तो ये मेरा आंसर है उनको। अच्छा सर, कुछ और क्वेश्चंस भी आ गए हैं। एक ये है कि कैप्स फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, इज इट एसेंशियल, नॉट एसेंशियल? No, no. For diploma holder, no, nothing. Okay, so for diploma holders, should they go to APC or VETASIS?
Say again, please repeat that question. एपीसी डिप्लोमा होल्डर्स जो है वो इनिशिएट कहाँ से करें, एपीसी से या वेटासिस से? विटासिस से। वेटासिस से। इंडस्ट्रियल अच्छा, और दोनों जो हैं वो विटासिस को जाएंगे। हमारे फार्मेसी डिग्री होल्डर जो कैप्स करना चाहते हैं वो सिर्फ एपीसी को जाएंगे। अच्छा, एक इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है इजाजुल्ला साहब ने कि एक्सपीरियंस रेफरेंस का जो फॉर्मेट है एपीसी का वही फिल करना है या सिंपल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी विल इट वर्क? ओके, तो ये फॉर्मेट होगा सर एपीसी प्लीज का आस्क द क्वेश्चन जिसमें अगेन। ये किसकी बात हो रही है, दोबारा पूछिए। एपीसी पे एक रेफरेंस का फॉर्मेट है एक्सपीरियंसेस का ना, तो नहीं, छोड़ दें, वही जस्ट लीव इट, जस्ट इग्नोर दैट, प्लीज डोंट गो इनटू दैट, बिकॉज एपीसी कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, इतने एप्लीकेशंस आए हुए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आपका वर्क एक्सपीरियंस देखें। हमें सिर्फ आपकी डिग्री देखनी है, आपको देखना है कि आप अपने कंट्री में रजिस्टर हो कि नहीं हो, दैट्स इट। ठीक। जस्ट इग्नोर अच्छा, दैट। इसके अलावा सर के डिफिकल्टी लेवल क्या है एग्जाम्स का? पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बैठते हैं तो पास हो जाते हैं, क्या क्लियरेंस है? ये हाउ मच सवाल इज है द ना, ये सबसे डिफिकल्टी जबरदस्त स्केल? सवाल है, ये सबसे मजेदार सवाल है। देखिए, डिफिकल्टी लेवल इतना है कि उन्होंने 50% मार्क्स रखे हुए हैं कि अगर आपने 50% करेक्ट कर दिया या उससे ऊपर करेक्ट कर दिया तो वो आपको पिक कर लेंगे एज ए पास कैंडिडेट। सर फॉर्मेट क्या होता है? एमसीक्यू बेस्ड होता है, रिटन होता एमसीक्यू है, बेस व्हाट होता इज है इट? जी, एमसीक्यू बेस होता है। इसे 100 200 क्वेश्चंस होते हैं, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 कैप्स के अंदर, जो कि 100 एमसीक्यूज होते हैं, जो कि 2 घंटे टाइम दिया जाता है और आप कर सकते हैं। और हमारे साथ जो हमारे कुलीग्स होते हैं, जो हमारे एलीट ग्रुप के जो कुलीग्स होते हैं, वो इतने बड़े शहजादे होते हैं कि वो 1 घंटे का पेपर जो है ना, वो मेरे ख्याल से 45 मिनट में मार के आ जाते हैं। हम्म 2 घंटे का हम्म पेपर 1.5 घंटे से भी कम टाइम में करके आप मेरी अगर कोलीग्स की वो वेबिनार सुने ना, जो उन्होंने अभी अटेंड किया मार्च के अंदर, उन्होंने बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के कि यार चले, मैंने किसी के साथ किसी को गाइड किया और वो अब बता रहे हैं कि मैं तो अब एग्जाम का रिजल्ट आ गया ना, अब वो खुल के बता रहे हैं कि पता है आपको, मैंने एग्जाम जो था ना वो 2 घंटे वाला, वो मैंने 1 घंटे 15 मिनट में कर लिया था। तो मैंने कहा अरे तुमने पहले तो बताया नहीं। तो उसको क्लियर था कि एग्जाम पास होगा नहीं, ये फेल होगा, तो वो पास होने के बाद उन्होंने खुल के बताई चीज। तो देखिए, उनके कुछ टॉपिक्स हैं एग्जाम में, उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। टॉपिक्स मतलब कि मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स तो नहीं, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलेशन, स्ट्रक्चर, इन सब पे वो सवाल देते हैं इन 200 क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। और वो ये चाहते हैं, वो ये उनका जो प्राइसिंग क्राइटेरिया है, वो ये कहते हैं कि अगर हमने 2 स्ट्रक्चर के क्वेश्चन दिए उन 200 पेपर के 200 क्वेश्चंस के अंदर, तो अगर स्टूडेंट ने दोनों फेल कर दिए, दोनों खराब कर दिए, देन यू आर फेल फॉर द एग्जाम, ठीक है। अगर उन्होंने 10 सवाल दिए उस दिन स्ट्रक्चर के 10 क्वेश्चंस, आपने 10 के 10 ठीक कर दिए, 10 ओके। आपने 10 में से 5 भी ठीक कर दिए, यू आर ओके। आपने 10 में से 4 सही किए, यू आर फेल। टॉपिक बेस्ड पासिंग मार्क्स हैं, ऐसा ना समझिए ओके। अगर वो क्राइटेरिया उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आपने 50% मार्क्स लेने हैं तो आप आधा पेपर खराब कर दो, आधा पेपर सही करके आ जाओ, तो डोंट एक्सपेक्ट। 50% मींस इन एवरी सेक्शन 50%? एवरी टॉपिक एवरी टॉपिक। सेक्शन तो नहीं कि उन्होंने कराई, क्योंकि हर बंदे का एग्जाम डिफरेंट आएगा। अगर आपके 25 बंदे एग्जाम में बैठे हुए हैं ना उस दिन कंप्यूटर पे, हम्म तो सेंटर में, हम्म तो बराबर वाले एग्जाम कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। ऐसा नहीं कि पर्चा आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन पास पेपर्स हम जो शेयर करते हैं तो उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको अंदाजा होता है कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। हो सकता है नीचे मल्टीपल चॉइस का चेंज हो जाए, क्वेश्चन वही हो, मल्टीपल चॉइस चेंज हो जाए, नॉट लगा दें उसके अंदर, उधर से नॉट हटा दें। तो आपको बस समझना है, और जैसे ही आप सवाल देखेंगे आपको याद आएगा, अरे मैंने पढ़ा था, वो जो डॉक्टर साहब ने नोट्स दिए थे, मैंने पढ़ा था ये। अगर आपने सही से पढ़ा है 5 घंटे 2 महीने भी पढ़ा है ना, तो ये पेपर पास हो जाता है। Right, sir. तो Okay, lastly, I would like to address all the participants. There have been some questions जो कि सर ने already address कर दी हैं regarding experience and stuff. ये जो हमारी आज की session है, that is recorded, और also सर के previous sessions भी हैं, they are available on the channel. Sorry to interrupt, but मेरे mind में एक ambiguity थी, so can I ask a question? Sure, you can. Okay, so अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने लास्ट ईयर आपका वेबिनार अटेंड किया था, सो आई एम करेंटली अ ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड मैं जो हूँ वो करेंटली एप्लीकेशन प्रोसेस में हूँ, बट आई एम डूइंग अ जॉब इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी। मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयड हूँ रिसेंटली, और मेरा है एम्बिशन कि मैं कैप्स पास करूँ। नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ।
तो मैं इस अनसर्टेनिटी में हूँ कि शुड आई कैरी ऑन विद जॉब इन माय इंडस्ट्रियल सेक्टर, या मुझे स्विच करना पड़ेगा लेटर ऑन इन हॉस्पिटल और कम्युनिटी सेक्टर इन पाकिस्तान टू इवन गेट सॉर्ट ऑफ वीजा, या टू इवन बीइंग कंसीडर्ड, या मैं यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैरी ऑन करूँ और आफ्टर पासिंग कैप्स मैं वहाँ आके एक फ्रेश कम्युनिटी में स्टार्ट लूँ। देखिए सर बिफोर यू आंसर मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट इसमें ऐड और कर दूं कि यही एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने वापस पूछा हुआ है, आपने जवाब दिया है लेकिन स्टिल इस पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें कि एक्सपीरियंस फील्ड में अगर यहाँ पर है तो इज इट वैल्यूएबल या कितना होना चाहिए एंड क्या उसकी कंसिडरेशंस है, एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फार्मेसी वर्किंग इन पाकिस्तान। मैं दोनों आंसर करता हूँ। थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस राफे। इफ यू वर्किंग इन इंडस्ट्री राइट एंड if you doing the caps, ठीक है, passing the caps right now in Pakistan will give you an opportunity to apply for the visa 491 base as a non-experienced pharmacist, and you can get that visa 491 visa. Is it clear to you? Yeah. Okay, but keeping in mind that industrial pharmacist pathway तो खुला हुआ है अभी वीजे में, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर यहाँ जॉब्स नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स जो है ना वो कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग में है, रीजनल के अंदर। यू नीड टू सेट योर गोल्स कि आप क्या करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। I got it. So if you want to direct your goals to work in community pharmacy, so you will be better off working in community setting right now in in Pakistan. You have more confidence when you come in and be in the interview, when job market will assess you, rather than showing कि मैं इंडस्ट्री में था और मैं इधर आके अब ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि जॉब यहाँ है तो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो are you getting my point? Yes, I am getting your point. So well prepared before water goes over you. Okay. 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 डॉक्टर राफी, आपने जो सवाल किया है कि एक्सपीरियंस से रिलेटेड, देखें एक्सपीरियंस लेटर और एक्सपीरियंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ऑस्ट्रेलिया में इंडस्ट्री के केस को डेवलप करके यहाँ माइग्रेट होने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्योंकि उस पर कैप्स तो है नहीं, एग्जाम तो है नहीं, वो जस्ट अपने डॉक्यूमेंट पूरे करें और बिटासिस से असेस करवाएं और इंग्लिश का टेस्ट पास करें, स्टेट नॉमिनेशन लें और वीज़ा अप्लाई कर दें 491। यहाँ बहुत लोग पहुंचे हुए इस तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन उनको एक हर्डल हिट करती है लैंड करने के बाद, जॉब कहाँ करेंगे? यहाँ तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, इंडस्ट्रीज हैं लेकिन वो ऑलरेडी जॉब्स फिल अप है, यहाँ पे डिमांड नहीं है उसकी। ठीक है, तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि यार कैप्स कर लो, कैप्स कर लोगे ना तो कैप्स की मार्केट खुली हुई है जॉब की। तो based on experience of industry you can come as a Vitasis, based on your hospital and community experience pass the caps, come to Australia, get good 491 visa। और जो टेक्नीशियन वाले साहब हैं या भाई हैं वो अपना टेक्नीशियन में असेसमेंट डालें विटासिस से, कोई एग्जाम नहीं है उसके अंदर, और आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो पीछे का एक्सपीरियंस का मैं ये जवाब दे सकता हूँ जी। लेकिन इस तरह ना समझिएगा कि आप एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं उस पाकिस्तान से या मिडल ईस्ट से, उसको आपको ह्यूज वेटेज मिलेगी यहाँ पे जॉब में, वो जरूर पॉजिटिव पे शो होगा, लेकिन यहाँ पे काम बहुत डिफरेंट है। यहाँ की फार्मेसी जो है वो बहुत डिफरेंट है। स्कोप ऑफ फार्मेसी में मैंने वेबिनार किया था, तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो प्लीज वो वॉच कीजिएगा जाके कि यहाँ काम कैसा है फार्मेसी में, कम्युनिटी फार्मेसी में करते क्या है। कम्युनिटी फार्मेसी इंटायरली डिफरेंट है ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड। इंग्लैंड से कुछ मिलती जुलती है, कनाडा वाले हमारे से आगे हैं, लेकिन पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट है। Thank you so much, sir, for again an excellent and informative session. I would like to add here that it's been a decade, like nearly 10 years or so, that I am associated with Pharmacy Graduate Association as their state secretary. And again, PGA has always given us so much opportunities to learn and grow. I am feeling very pleased today after attending this session that our students and everybody who is associated from the pharmacy field will get so much valuable information if they want to come to Australia. And now for the thanking remarks and closing remarks, I would like to request Sir Zain, who has always been a beacon of light for us and has given us this opportunity that we have availed in such a positive manner. Sir, please अपने कुछ remarks share करें हमारे साथ. Thank you so much. जज़ाकल्लाह इरफान भाई, आपने
बहुत ही अच्छे अंदाज में कनाडा और नॉर्वे और दीगर ममालिक पे रोशनी डालते हुए ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन पे बात की। एक्चुअली एक फियर है यहाँ के फार्मासिस्टों को कि हम बाहर अप्लाई करें तो क्या होगा, एग्ज़ाम पास कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में उनको इतनी डेप्थ में नॉलेज नहीं होती कि वो अब्रॉड जाके किस तरह से अपने आप को मनवाएं और वहाँ अपना रोल अदा कर सकें। तो अभी जैसे आपने गुफ्तगू में फरमाया कि आपके पास गोल होने चाहिए कहीं भी जाके वहाँ अपना रोल अदा करने के लिए। तो हमें इसके लिए एजुकेट करने की ज़रूरत है और पीजीए का बुनियादी मकसद भी यही है कि हम एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम पे फोकस करते हुए एक वैल्यूएबल फार्मासिस्ट प्रोड्यूस करें पाकिस्तान की सतह पे, ताकि वो मार्केट में जाके यूएई में या ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, नॉर्वे में, जहाँ कहीं भी उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो अपना वहाँ एक पॉजिटिव रोल अदा कर सके। तो इस हवाले से आज आपने बड़ी डेप्थ में जाके फ्रेश फार्मासिस्ट, एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट मिला जुला के एक बेहतरीन सेशन ये ऑर्गेनाइज किया और होपफुल चीज़ों को ज़्यादा आपने हाईलाइट किया, क्योंकि हमारे यहाँ ये और भी इशू है कि डिप्रेशन वाली बातें हम ज़्यादा करते हैं। हौसला मंदी होनी चाहिए, चाहे किसी भी सतह पर हो, और हम ही अगर हिम्मत नहीं दिलाएंगे तो फिर सफ़र शुरू कैसे होगा। तो इस हवाले से हमारा शुरू से ये ऑब्जेक्टिव है कि हम फार्मेसी प्रोफेशन को अपलिफ्ट करने के लिए जितना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, डिवोशन और साथ ही साथ उनकी एक्सपर्टीज़ के लिए जो हमसे मुमकिन हो सके हम अपना किरदार अदा कर सकें। और आप जैसे वैल्यूएबल फार्मासिस्ट हमारे सफ़र में शामिल हो गए तो हमारे हौसले में और इजाफा हुआ है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो बगैर किसी पर्सनल इंटरेस्ट के करते हैं। हमारी पूरी टीम डिवोटेड है और जब हम कहते हैं वो अवेलेबल होती है। इस हवाले से हम बड़े खुशकिस्मत हैं। और ख़ास तौर पे जैसे हमारी राफ़िया हैं, ये स्टूडेंट लाइफ से पीजीए के लिए काम कर रही है एज ए वाइस प्रेसिडेंट कराची यूनिवर्सिटी की। हमारे साथ इनका इंट्रोडक्शन हुआ था, इन्होंने बहुत वर्किंग की ट्रेनिंग और एजुकेशन के हवाले से, और अभी तक वो सिलसिला जारी है। इसी तरह इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर खावर खालिद, जी जी जो कि इरफान भाई आपसे कनेक्ट रहे हैं और सारी अरेंजमेंट में उनका मरकजी किरदार रहा है। वो भी बहुत ही डिवोटेड शख्स हैं और हमारे लिए उनके तारीफ में कोई अल्फाज नहीं है। वाह ऐसे ही हमारे प्रोफेसर साहब हैं, अगर इस वक्त मौजूद हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ उनके भी ख्यालात से हम मुस्तफ़ीद हों। प्रोफेसर डॉक्टर लियाकत रज़ा, जो कि पाकिस्तान में मैं कहूँगा कि नॉलेज के एतबार से एक बहुत बड़ा सरमाया है माशाल्लाह। और यंग एज में उन्होंने ये सारी चीज़ें हासिल की हैं और वो हमारे पैटर्न भी हैं। माशाल्लाह। तो एक बेहतरीन फार्मासिस्टों का गुलदस्ता हमारे साथ अटैच है, जो कि पाकिस्तान लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे साथ सर्विस दे रहा है फॉर अपलिफ्टिंग ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। तो अगर लियाकत रज़ा मौजूद है तो मैं चाहूँगा कि उनको भी राफ़िया उसमें शामिल कर लें, 2-4। बिल्कुल बिल्कुल सर लियाकत, डू वी हैव यू?
जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, चलें जी। सबसे पहले तो मैं जो डॉक्टर इरफान साहब है उनका शुक्रिया अदा करूंगा, जारी बात है बाहैसियत पैटर्न पीजीए के भी और बाहैसियत एक स्टूडेंट के भी। जारी बात है कि मैं उनको बड़ा कंसंट्रेशन के साथ सुन रहा था। जारी बात है एक अपनी फील्ड का मेंटोर और अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस पर्सन जब आप उसके लेक्चर सुनने जाएं तो बाहैसियत स्टूडेंट जाएं, भले आप खुद भी प्रोफेसर क्यों ना हो, भले आप खुद भी टीचर क्यों ना हो, लेकिन आप जब किसी ऐसी लेक्चर या सेशन में हो तो अगर आप स्टूडेंट बन के जाएंगे तो आप गेन करेंगे। तो ये मैं जो आज के सेशन में बैठा था वो बाहैसियत एक स्टूडेंट के बैठा था ताकि मैं भी कुछ गेन कर सकूं उनकी एक्सपर्टाइज से। और मुझे बहुत ही यानी खुशी भी हुई जिस अंदाज में उन्होंने पूरे इस टॉपिक को रैप अप किया और हर पॉइंट से लेके मेजर पॉइंट बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली उसको कवर किया। तो बहरहाल मैंने भी बहुत सारी चीजें लर्न की हैं सर, बहुत शुक्रिया। और आपने जिस अंदाज में इस टॉपिक को जो है वो रैप अप किया, इट वाज लाइक फैसिनेटिंग भी और मोटिवेटिंग भी। और इसमें छोटा सा एक सवाल भी होगा उसमें मेरी तरफ से कि चूंकि काफी लोग मुझसे क्योंकि टीचिंग में भी इन्वॉल्व हूँ तो अक्सर लोग जो हैं वो इस तरह के सवाल भी पूछते हैं। ठीक है भाई, एक स्कोप हमारे पास जरूर है कि हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट या कम्युनिटी फार्मासिस्ट या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में जाएं। तो जो अब्रॉड जो हमारे पास कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें बाहैसियत जो है वो अगर टीचिंग में हम जाना चाहें तो उसके लिए क्या स्कोप है, यानी स्कोप के एतबार से पूछना चाहते हैं अफराद। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि भाई ठीक है हम मतलब इमिग्रेट तो करना चाह रहे हैं लेकिन मिसाल के तौर पे हम जो है वो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पे नहीं जाना चाहते, बल्कि हम जो है वो एज एकेडमिशियन जो है वो यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, फार्मेसी स्कूल्स हैं वहाँ के। इसके हवाले थोड़ा सा आप अगर इनपुट देना चाहें। और मैं एक बार आपको माइक देने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फिर आपका भी और जैन साहब का भी, राफिया की, बिलखुसूस खावर की जिसने सारी वर्किंग की इसके पीछे इतनी अरेंजमेंट्स के अंदर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। एज एन एकेडमिशियन और फैकल्टी मेंबर ये क्वेश्चन मैं भी सेकंड करती हूँ, तो आप प्लीज इसको भी बता दें अच्छे से। जी जी देखिए ये जो सवाल आपने थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लियाकत फॉर योर वंडरफुल फीडबैक वंडरफुल आपने जो बताया कि मुझे एकदम एक चीज़ याद आई कि आप जब बात कर रहे थे तो मैं कहना चाहूँगा कि देखें जो भी मैंने डिस्कशन किए हैं ये कोई बुक पे लिखी हुई चीज़ें नहीं है, ठीक है, ये मेरे हार्ट से निकली हुई चीज़ें हैं। और मैं चाहता था कि ये चीज़ें मैक्सिमम कैपेसिटी में मैं पहुंचा सकूं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग यू एंड वेलकम। ऑब्वियसली आप टीचिंग से ताल्लुक़ है तो आप एक तरीके से एक विंडो क्रिएट कर सकते हैं उन बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए जो अगर अपने कैरियर को ऑस्ट्रेलिया में आप एक तरीके से एम्बेसडर बन सकते हैं। आप इस मैसेज को कन्वे कर सकते हैं जो इसने आपने जो भी मेरे से कुछ आपने कुछ नोट्स लिए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो आप अपने डिस्कशन में जहां आप चाहें वो यूज कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह। मैसेज रिले कर सकते हैं आप। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जो क्लिनिशियंस या सॉरी एजुकेशन से रिलेटेड जो फील्ड से जैसे कि लेट्स से कि आप में से किसी ने पीएचडी किया हुआ लेट्स से, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे टीचिंग फैकल्टी में काफ़ी जगह है इस कंट्री में, ठीक है, लेकिन आपको पहले ये समझना है कि आप किस तरह ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, किस तरह अपने आप को यहाँ पे आपके पास वर्किंग राइट, स्टे राइट। ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना कि ये कैसे होगा। या तो आप किसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट करें किसी पीएचडी स्कॉलरशिप या इस तरह के उस पे, या फिर ये जो अभी लॉटरी वीज़ा खुला हुआ है ना 491 वीज़ा, ये आप ले लें और पहुंच राइट। जाएं। जब यहाँ मार्केट में एंटर हो जाएं इंडस्ट्री, मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, कैप्स जो है आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तक ला दे के खड़ा कर देता है आपका। देन यू बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, फुली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आपका, ठीक है। तो वो जो रजिस्ट्रेशन का जो टैग है आपके पास जब होगा ना आपरा का, देन आपकी वर्थ ही कुछ और होगी। आपकी जो पीछे का एक्सपीरियंस है टीचिंग का या आपकी राइट जो राइट। हाई हाई डिग्री से उनकी वर्थ को वो चार चांद लगा देगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। विदाउट दैट इज वेरी हार्ड। तो ओके। हाँ, विदाउट दैट आपको पाथवेज ढूंढने होंगे। मेरे पास बहुत ज्यादा एमफिल किए हुए और पीएचडी करने वाले मेरे ग्रुप्स में हैं, और उनको ये बात बहुत मुश्किल से समझ में आती है, ये बात कि हम क्यों करें कैप्स। मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूंगा वो कैप्स क्यों करें, आप वर्किंग राइट मिल रहा है आपको,
आपको Right. के लिए इस कंट्री में खुल्लम खुल्ला आके रहने की, एंट्री बिल। तो वो कोई कम वैल्यू की चीज है। Exactly. Perfect. तो ये सिंपल सा मैसेज। और लॉटरी वीजा खुला हुआ है, ले लें। जिसको पीएचडी पाथवे पे आना है, इस वो जो गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप वाली होती हैं वो भी हैं, लेकिन वो उसमें कोई ऐसी डिमांड नहीं है इस वक्त जिस तरह की इस चीज पे। उसमें कोई स्टेट नॉमिनेशन अवेलेबल नहीं है उसके अंदर, Okay. उस वाली फील्ड के अंदर। स्टेट डोमिनेशन का मतलब है कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया डे की तकरीब हुई थी 26 जनवरी, जैसे पाकिस्तान में 14 अगस्त होती है, तो जी पाकिस्तान जी। इंडिपेंडेंस डे, इस तरह ऑस्ट्रेलिया का 26 जनवरी डे होता है, ऑस्ट्रेलिया डे। ठीक है। Right. मैंने एक अपने अगेन मैं टिकटॉक पे आऊंगा। टिकटॉक पे मैंने एक वीडियो शेयर की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तकरीर की, 26 Mm-hmm. जनवरी की। और उसमें Okay. उसने उस उतने बड़े कॉन्फ्रेंस में उसने बताया, वी नीड फार्मासिस्ट इन दिस कंट्री। माशाल्लाह। तो वो प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त मिस्टर एल्बनीज है, वो 26 जनवरी की तकरीर में कह रहा है, और वो थैंक यू कर रहा है ओवरसीज के लोगों को, इमिग्रेंट्स को, कि आई रियली वांट टू थैंक यू टू पीपल who making Australia the home country, and I would like to acknowledge scientists, I want to acknowledge doctors, because we need। Right. बताया, अब मेरी, अगर आप टिकटॉक पे हैं नहीं है तो अगर हैं तो आ जाइए टिकटॉक पे, एक अकाउंट बना के मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। तो वो क्लिप आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि प्राइम मिनिस्टर फार्मासिस्ट को बात कर रहा है अपने उस भरे, जैसे कोई सारी परेड होती है ना 23 मार्च की, उस जगह वो फार्मासिस्ट का नाम ले रहा है। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी, तो Right. बड़े फख्र से शेयर किया था। Exactly. जी। तो आ जाएं, आपको भी कह सकता हूँ। अभी यहाँ एक पीएचडी, डबल पीएचडी है वो, कराची यूनिवर्सिटी की पीएचडी, और उन्होंने यहाँ से भी पीएचडी। ठीक है। अच्छा। सिटीजन है, सिटीजन, पीआर पे नहीं, 49 वीजे पे भी नहीं, सिटीजन पे। Right. उनको जॉब में बताया गया है कि आप कैप्स करके आओ, रजिस्टर होकर आओ। Okay. ठीक है ना। तो कैप्स की सिग्निफिकेंस तो है। Right. तो कोई Got छोटा it. नहीं हो जाता हाई पीएचडी अचीवर। इट गिव यू Right. a base in your building. Okay. Perfect. Very nice. Thank you. और Sir, कैप्स one more question I would like to address, वो भी काफी यहाँ पे point out हो रहा है कि अगर आपका by chance you fail the test, तो what do? You have to pay the fees again for the appearance, या ऑस्ट्रेलिया आपको नहीं छोड़ेगा, फीस तो ले लेगा आपसे वो, लेकिन आपको वो 2 करोड़ की वैल्यू वाली डिग्री का भी आपको एक अट्रैक्शन दे रहा है, आपको जॉब मिल रही है। उसको टारगेट बनाए। उसको अगर टारगेट रखेंगे ना कि एंड रिजल्ट क्या लेना है हमने, तो बीच का जो प्रोसेस है ना वो खुद ही ठीक हो जाएगा। तो ये जो फियर है ना, ये सबसे पहले तो फियर को खत्म करना है हमने। तो अभी भी मेरे ग्रुप में एक सवाल कर रहे हैं कोई, उन्होंने हाथ रेस किया हुआ है, फैजान, मैं उनसे बात करना चाहूंगा क्योंकि वो मुझसे बड़े प्राइवेट मैसेजेस बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी फियर है उनके पास, कि उनको फियर है बहुत बड़ा। तो क्या उनको आप इजाजत देंगी, वो क्वेश्चन कर सकते हैं? बिल्कुल सर, उमर फारूक फैजान जी साहब आप अपना रेज माइक हैंड ऑन किया, कर सकते हैं। जी रेज हैंड किया हुआ है। उमर फारूक भी हैं, उन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ है, तो अगर वो उमर जी पहले जी से हैं तो वो बात कर लें मुझसे। जी जी उमर Yes. साहब। Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। जी Umar Farooq. जी जी जी। I'm working here as a pharmacist in UAE. I अच्छा। have 5 years of experience now working as an in charge. So I had a question that what are the growth opportunities when you hunt a job in Australia as a pharmacist? So what are the opportunities, what are the levels, growth opportunities you can from start as an internee pharmacist? इंटर्न Then what फार्मासिस्ट। are the levels ठीक है। internee, like you will get in internee pharmacist ये for first इंटर्नशिप 1 ईयर year? में कंप्लीट हो गई। ठीक है। Yes. आपने After that, what are the levels you can achieve within an organization in Australia? देखिए, इफ यू प्रूव योर वर्थ एज ए इंटर्न, ठीक है, तो दैट बिकम वेरी कॉमन, easy going step for your progress. If you prove wrong in your internship, then your doors will be closed. ठीक है। तो must be very hard working, must be very energetic, must be initiative, टाइम पे पहुंचे, वो सारी चीजें जो बेसिक चीजें चाहिए होती है वो करें। और उसके बाद देखें नेक्स्ट लेवल होता है
शिफ्ट इंचार्ज का, उसके बाद फिर आप मैनेजरशिप पे आते हैं। मैनेजरशिप पे आते हैं तो उसके अंदर भी कोई सीनियर 3 तरह के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप वो सब कुछ कर जाते हैं तो देन यू कैन गो फॉर द बिजनेस पार्टनरशिप, और बिजनेस पार्टनरशिप में जा सकते हैं। इसके अलावा एक तो ये एक लेडर है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं अपने ग्रेजुएट्स को या अपने मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, मैं उनको एक और विंडो दिखाता हूँ। मेरे वेबिनार में करीब बातें हो रही होती हैं लीडरशिप की, तो उस पे मैं ये बताता हूँ कि जब आप इंटर्न बनोगे पहले साल में, तो मैं उनको दिखाता हूँ इस साल का जो इंटर्न ऑफ द ईयर अवार्ड जीता हुआ बंदा है ना, उसको जरा देखो उसने क्या किया है। आई वॉन्ट यू टू विन दैट अवार्ड इन दिस कंट्री। तो जब वो उनको देखते हैं या उनका प्रोफाइल पढ़ते हैं या उन्होंने जो काम किया होता है या जिसके दिल में तड़प होती है कि यार इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, ये अगर कर सकती है या ये कर सकता है, या ये इंटर्न ऑफ द ईयर जीत सकता है ऑस्ट्रेलिया में। जो इंटर्न ऑफ द ईयर जीत लेता है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उसकी पब्लिकेशन होती है बड़े मेगा लेवल पे, उसको उसको स्कॉलरशिप अवार्ड्स मिलते हैं, फिर उसकी डिमांड खुद ही क्रिएट हो जाती है। तो व्हाई नॉट थिंक फॉर दैट एक्सेलेंसी लेवल। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। इंडस्ट्री में लीड करने की बात कर रहे हैं, तो जब आप इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाते हैं तो आपको हाथों हाथ लिया जाता है, लोग भागते हैं पीछे, जॉब्स आपके पीछे भागती हैं। और इस कंट्री के अंदर बहुत आसान है ये करना, क्योंकि ये कंट्री जो है ना बहुत छोटा सा कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया है तो बड़ी इकॉनमी, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, लेकिन हमारे कराची से कम पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की। पॉपुलेशन वाइज यस। कराची कितना बड़ा सिटी है, उससे भी कम लोग रहते हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ओके, एक और चीज सर मैं ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक ये सोशल मीडिया शाय वाली बात आप मेरे लिए कर रहे थे। आई वाज सेंडिंग मेरे प्राइवेट साथ 1500 मैसेजेस। स्टूडेंट है भाई, आप थोड़ी अपने ऊपर क्यों ले जा रहे हो आप? ओके ओके, आई एम आल्सो इन वन ऑफ देम। ओके। सो मैंने भी कैप्स का असेसमेंट दिया है, अराउंड 1.5 मंथ हो गया है। होपफुली 2 मोर वीक्स तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो When do you आई रिक्वेस्ट यू टू when do you ring exam? आई yes, around 1.5 months back. नहीं I नहीं, don't remember the एग्जाम date. कब करने वाले हैं आप? कब करने वाले हैं एग्जाम? जुलाई में? मैं सर नवंबर में I was thinking of July, but यहाँ पे schedule और burden जरा ज्यादा है, तो That's fine, now all good. I have shifted my plan to November. Okay, sure, we will do that, no problem. Thank you very much. Okay, sir. Thank you so Thank you, much, sir. Umar Thank sir. you very much. Thank you. And Thank you. And can we hear Faizan साहब also? आपने भी फैजान, काफी टाइम से हाथ रेस किया हुआ है। जी फैजान जी प्लीज सर, आइए, मैं बात करें, कैमरे पे आए तो मुझे अच्छा लगेगा प्लीज। जी सर, सर कैमरे पे वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं मैं आ रहा ना। तो मैं वैसे बात करूंगा सर। वो मैंने 5 अप्रैल को ना स्किल असेसमेंट के लिए अप्लाई किया था, तो अब वेट कर रहा हूँ स्किल असेसमेंट की लेटर का ना, एपीसी की तरफ से ठीक है। मेल का। तो वो मुझे ये था कि मैंने जुलाई में बुकिंग करवानी है, 19th ऑफ जुलाई, मतलब इसी ईयर जो 19th ऑफ जुलाई कैप की बुकिंग करवानी है। तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि प्रीवियस जो ईयर के क्वेश्चन है उनकी रेपिटेशन के कितने % चांसेस है। तो वो मैंने वो बता दिया क्वेश्चन, आपको। तो वो मुझे मटेरियल, मैंने कहा अगर कंटेंट मिल जाता तो वो ज़रा मेरी एक हेल्प हो जाती, क्योंकि मैंने जुलाई में। जी कंटेंट जी मिलने की मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। डॉक्टर रफिया डॉक्टर ने भी बात भी की थी कि किस तरह ज्वाइन कर सकते, तो आपने सुन लिया होगा मेरा मैसेज, आंसर सुन लिया होगा आपने कि हाउ यू कैन ज्वाइन माय ग्रुप एंड देन यू कैन हैव अ प्रिविलेज टू टू मीट with fearless pharmacists who are doing the CAPS exam. You can mingle with them and you can study with them. How's it drop line हो गया मैसेज? सर यहाँ पर एक साबिर साहब है, उनका भी एक मैसेज है, I'll just read it out. अस्सलाम वालेकुम सर, नंबर 1 CAPS exam certificate expiry date, and number 2 if assessment completed after January 2024 can we select month July to write exam? Yes, no issue with choosing. आप कैप्स असेसमेंट आज करवा लीजिए, एग्जाम भले 10 साल में दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। एक्सपायरी ऑफ कैप्स पासिंग जो है वो उन्होंने एक रखी हुई एक्सपायरी, वो कहते हैं 3 साल के अंदर अंदर पास करके ऑस्ट्रेलिया आके इंटर्नशिप शुरू कर लें, ये उन्होंने एक नॉर्मल क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो दैट्स द आंसर, पर उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी है। कोविड में ये हुआ था कि बॉर्डर्स ही बंद थे यहाँ के, पूरा दुनिया बंद थी उस वक्त, तो उन्होंने फिर सबको 1-1 साल एक्सटेंड कर दिया था उस टाइम पे जिनके हुए थे।
Right, sir. Thank you so much once again to Sir Irfan and to the complete organization of Pharmacy Graduate Association, especially Sir Zain, Sir Khabar, Sir Liaquat. All of us have collaborated together so that the audiences, our participants, get to learn a lot about, moving towards Australia and how further scope and further prospects are there available for you. I hope this was a very informative session. I would like to request the participants to leave their feedback as well. And thank you so much. From my end, Dr. Afia Ahmed, I would like to wrap the session. Jazakallah. Thank you so much. Thank you very much for having me. Thank you so much. Like Sarvik, इरफान भाई, अल्लाह ताला खुश रखे आपको और आपको इसका अजर अता करे। आमीन आमीन बिल्कुल। Thank you. Jazakallah, sir. Thank you so much. ठीक है, thank you very much.